देख रहे हैं, ये अपने आप में भारतीय संस्कृति का एक अलग रंग हम तक लेकर आती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं उत्तर की, कैसे उत्तर और दक्षिण को राम नाम ने अपने साथ जोड़ा है। इसीलिए जिस तरह से तुलसीदास हमेशा कहते हैं, भज राम, क्योंकि राम से बड़ा है राम का नाम। यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रश्न है, जहाँ से श्री गणेश हो रहा है कालाराम मंदिर से जी, हरिजनों को, दलितों को प्रवेश नहीं कराया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर का, संविधान निर्माता का साथ स्वतंत्र वीर सावरकर ने दिया, और उस समय शंकराचार्य डॉक्टर कुर्तकोटी ने सावरकर का समर्थन किया, जो आगे चलकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। तो सबसे बड़ी जो चीज है, जब तक सामाजिक समरसता नहीं होगा, जब तक आपस में सौहार्द नहीं होगा, जब तक आपस में प्रेम नहीं होगा, जब तक आपस में भाईचारा नहीं होगा, तो ये सामाजिक समरसता का ही प्रतिरूप है स्वामी जी। की हम देख रहे हैं कि अगर अयोध्या में राम नाम का शंखनाद है तो उसका शोर रामेश्वरम तक है। और इसीलिए जब हम तमाम युगों की बात करते हैं, चाहे त्रेता है, द्वापर है, बात मत करिए जी, इस समय संपूर्ण विश्व जो है सनातन के झंडा और राम नाम के गुंजन से गुंजित है, या गूंज रहा है। संपूर्ण विश्व में, ब्रह्मांड में गूंज रहा है। और एक बात और आपको बतला दूं, अयोध्या जो है विश्व की प्रथम नगरी है, राजधानी है, विश्व की प्रथम राजधानी है। 7 खंडों में पृथ्वी, सप्तर्षयः दीप बनानी सप्त। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो तमाम युग है, 7 खंडों में पृथ्वी है, जी, 7 समुद्र श्रृंखलाएं हैं, 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, 7 जी जी, है, और हमारा जो शरीर का चमड़ा है यह भी जी जी आता है, 7वां आता है, करता है, तब रक्त निकलता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने अपने इतने संपूर्ण विचार हमसे साझा किए, इस मन से साझा किए। तो ये तस्वीर, एक और निवेदन है, राजनीति में देखिए, तो प्रधानमंत्री पक्ष होता है, विपक्ष तमिलनाडु के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, रामेश्वरम से तस्वीरें सीधी। और सबसे अहम जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि तमाम तत्वों के रूप में जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उन तत्वों की इच्छा रखते हुए किस तरह से सनातन को जोड़ते हुए, और खासतौर पे जिस भारतीय संस्कृति पर हम सबको गर्व है, क्योंकि उसकी पाचन शक्ति इतनी उदार है, इतनी सशक्त और इतनी विस्तारवादी है कि इसमें सभी धर्मों का समावेश है। और इसलिए ये जो तस्वीरें हैं ये अंकित करती हैं वो रिश्ता, वो राम भाव, वो समरसता जिसके लिए भारत जाना जाता है। अयोध्या में जिस तरह से 22 तारीख का कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा विश्व जो है, पूरा देश जो है, वो प्रसन्नता से ओतप्रोत है, हर्षो उल्लासित है। ये तस्वीरें इस बात की परिचायक हैं कि जब हम बात करते हैं कि किस तरह से राम नाम और साथ ही इसकी संस्कृति से इसका जुड़ाव और ये जो विश्वास है वो हर भारतीय के मन में झलकता है। खास तौर पर रामनाथ स्वामी मंदिर में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पूजा अर्चन किया है, कई ऐसी जो बातें हैं जो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे, खास तौर पर इस रामनाथ स्वामी मंदिर को लेकर, जहाँ ये 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम में से एक है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक माना जाता है। और सबसे अहम यहाँ पर ये है कि जिस तरह से ऐसी कई जो बातें हैं वो प्रचलित हैं कि यहाँ पर मंदिर निर्माण में लगाए हुए जो पत्थर हैं उन्हें श्रीलंका की नावों के जरिए लाया गया था। रामेश्वरम मंदिर का ये जो गलियारा है विश्व का देखिए सबसे लंबा गलियारा है। और ऐसी भी कई हैं जो इस बात को पुरजोर तरीके से रेखांकित करती हैं कि इस मंदिर के अंदर जो तमाम कुएं हैं भगवान राम ने अपने बाणों से बनाए, और ऐसा भी माना जाता है इसमें कई तीर्थ स्थलों का जल जो है उससे मिलाया गया था। तो उस लिहाज से जो दो हम पूरक मानते हैं, जहां भगवान श्री प्रभु श्री राम शिव भगवान की आराधना करते हैं, शिव भी उन्हीं के भक्ति स्वरूप उनको पूजते हैं। तो उस लिहाज से देखिए रिश्ता कितना अनूठा और कितना भावपूर्ण है। और क्योंकि यहाँ पर श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में भी भाग लेने का
प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उस लिहाज से आप देखिए क्यों इतना अहम है। जब हम रामायण की बात करते हैं क्यों इतनी अहम है, अहम इसलिए है आप कितनी बार भी जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, वंदन करते हैं, श्रोता बनते हैं, हम कितनी बार भी उसमें जो तमाम मार्मिक संवाद हैं, चाहे अयोध्या वापसी के हों, हम केवट संवाद की बात कर ले, प्रभु श्री राम और भरत का संवाद देखा जाए, जब भी हम उसको सुनते हैं, सुनकर अश्रुधारा जरूर बहती है, क्योंकि ये किसी भाषा की अनुरूप नहीं, ये भाव के अनुरूप है। और रामचरितमानस में ये जो भाव है ये इंकित है और परिलक्षित है। उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम है। और अब इस राम नाम का श्रवण जिस तरह से खास तौर पर हम जब भी देखते हैं, खास तौर पर जो वो अयोध्या वापसी का प्रसंग है, वो अपने आप में बेहद बेहद हर्षोल्लासित तो करता ही है, बेहद मार्मिक है। और इसीलिए जिस तरह से प्रधानमंत्री, अब देखिए रामेश्वरम इस जगह के पूरे, अगर हम पूरे इस शब्द को देखें तो इसमें राम का नाम है, और इसीलिए राम नाम के साथ जब लगातार लोग जुड़ते हैं, उनका विश्वास जुड़ता है, उनकी भावना जुड़ती है। ये मंदिर अपने आप में प्रसिद्ध है और इसीलिए ये रामेश्वरम, और जब हम बात करते हैं उत्तर में अयोध्या की, तो भगवान राम का जो ये विश्वास है, ये जो भावपूर्ण हम कह सकते हैं एक भाव है जिससे तमाम जनता आत्मसात होती है, ये उस सेतु के रूप में इन दोनों को जोड़ता है। इसीलिए जब भी लगातार ये कहा गया है कि सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन नाही किए मनमीन, यानी इस नाम के साथ, इस मीठे नाम के साथ जब हम तमाम जो पंच तत्व हैं उनकी बात करते हैं, निरंतर हम जानते हैं कि भक्ति का रसपान करने के लिए इन पंच तत्वों की जरूरत है। और खास तौर पर जब कलयुग का जिक्र आता है तो राम नाम सबसे अहम जो बेड़ा पार लगाएगा, क्योंकि तमाम युगों में सबसे आसान है ईश्वर की प्राप्ति कलयुग में, सिर्फ नाम जप द्वारा। तो ये प्रधानमंत्री का जो तमिलनाडु का दौरा है, 4 धामों में से एक रामेश्वरम, अपनी आध्यात्मिक महत्वता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि प्रधानमंत्री यहाँ पर जो श्री रामायण पारायण में भाग लेंगे, और इसमें 8 अलग अलग पारंपरिक मंडलियां, यानी अलग अलग भाषाओं में यहाँ रामायण का पारायण पाठ होना है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे असमिया भाषा में किस तरह से ये जो रामायण पारायण कार्यक्रम है ये हुआ, और ये जो पूरी राम कथा रहेगी, इसमें अयोध्या वापसी के प्रसंग का वर्णन जिन भाषाओं का हमने जिक्र किया उनमें, आइए असमिया भाषा में किस तरह से अयोध्या वापसी का प्रसंग है, आइए आपको उसका श्रवण करवाते हैं। देखो
Trust is knowing someone's got your back and always showing up. Trust is a leap of faith, an unwavering commitment, a heartfelt choice. Trust is us. Agilus Diagnostics, India's largest diagnostics company. Agilus Diagnostics. Whenever people discuss India, they talk about the medieval history of India. The ancient history is forgotten. Today in Delhi, we see all kinds of roads. And till recently, there was Aurangzeb Road as well. But there is no Harshavardhan Road. There is no Chandragupta Maurya Road. Why? There is no Samudragupta Road. There is no Mahaji Shinde Road. Why? यहाँ गुड़गांव में रहने वाला एक 7वीं कक्षा का बच्चा, he was the youngest person to depose before a parliamentary standing committee. And he said that we have been fed to learn about Akbar and Aurangzeb in so many paragraphs. And about Rana Pratap, there are just 4 lines, and Chhatrapati Shivaji, just 5 lines. History requires to be revisited. And in the history, you will come across several such examples where history has been revisited. This revisiting, reassessment, re-evaluation is a part of our scholarship in a way. इन लोगों को पता नहीं कि ये सनातन का मतलब ही शाश्वत है. The literal meaning of Sanatan is eternal. तो सनातन कोई केवल एक उपासना पद्धति का नाम थोड़ा ही है. Whatever is eternal in this world, it's Sanatan. No part of Indian culture is divisive. We are always integrationist. Narrative चलाने वाले जितने सारे सोशल मीडिया है, वो भी तो एक दृष्टि से अमेरिकन कंपनीज के कंट्रोल में है. आज वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जिस पद्धति से भारत की एक छवि बनाते हैं और जो वास्तविकता है, इसमें बहुत अंतर है. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Thank you for liking or subscribing to the channel and for sharing with those who you think will benefit from these conversations. Today our conversation is about soft power. Does India exercise its soft power? Does India do enough to spread awareness about its heritage, about its culture? How does it benefit a country? It helps in building consensus about Indian political values, foreign policy and culture. Usually developed countries are able to exercise their hard power and soft power. For developing countries, it's all the more difficult to get the conversation going. And India fares pretty low in the influence it has globally. To understand this more, we have with us Dr. Vinay Sahasrabuddhe. He's been a member of parliament and is considered one of the foremost intellectuals of the BJP. But today the conversation is going to be more about soft power and whether India exercises it enough or not, rather than about BJP and her politics. Dr. Sahasrabuddhe, thank you so much for coming to the podcast. I'd like to begin with a topic which many people don't understand, which is soft power. Because you are from the BJP, a number of people will think BJP के बारे में पूछते हैं elections, कहाँ जीतेंगे, कहाँ हारेंगे, क्या होगा. लेकिन मैं सिर्फ सॉफ्ट पावर पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोगों के ओपिनियंस बड़े हैं, लेकिन इट्स कंफ्यूजिंग कि सॉफ्ट पावर आखिर होता क्या है और इसको कैसे एक्सरसाइज किया जाता है और क्यों करना चाहिए. तो थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड हमें बता दीजिए. सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने इस बहुचर्चित पॉडकास्ट पर हमें निमंत्रित किया. इट्स एन ऑनर टू बी हियर एंड टू बी रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चंस. And the subject that you have chosen to start with, which is about soft power, is also very, very important, because post-Cold War, as I understand as a student of international relations, दुनिया का जो मानचित्र बदला है उसमें जोग्राफिकल स्पेस ऑक्युपाई करने से भी माइंड स्पेस ऑक्युपाई करने को ज़्यादा महत्व प्राप्त हुआ है. और इसलिए एक कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के डायरेक्टर थे, बड़े मशहूर शिक्षाविद एक दृष्टि से, Joseph Ney. He had written a book on soft power, which was the first kind of a seminal work on the concept of soft power. And that was about 20 years before, in 2004, the book came. And a little before that, the discussion around soft power also got around. I mean, it started. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्ट पावर के कंसेप्ट आने के बाद ही सॉफ्ट पावर है, ऐसा तो नहीं है. दुनिया में सॉफ्ट पावर थी,
जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि भारत कहाँ है ये खोजने के लिए पहले कोलंबस और बाद में वास्को डी गामा निकल पड़े। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि भारत से जो स्पाइसेस का सप्लाई होता था वो उस युद्ध के कारण समाप्त हुआ था, उसमें रोड़े अटकने लगे। तो उनको लगा कि लेट अस गो, लेट अस फाइंड आउट, लेट अस लोकेट वेयर इंडिया इज। और इस भूमिका से, इस उद्देश्य से दोनों निकले। अब स्पाइसेस क्या है? इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर, क्योंकि भारत पहचानने से भी पहले लोगों ने हमारे स्पाइसेस की खुशबू को पहचान लिया था, उससे वो मोहित हुए थे। ये वास्तविकता है। इसी तरीके से हमारे रामायण महाभारत, भारतीय लोग शायद बाद में पहुंचे होंगे, मगर सुदूर जापान तक एक दृष्टि से, और ये सारा मलेशिया, इंडोनेशिया, सारा ही कोरिया है, यहाँ तक रामायण महाभारत पहुंचे थे। तो इसका मतलब ये है कि सॉफ्ट पावर इज बेसिकली अबाउट, I mean, I am not going into the dictionary meaning of the term soft power or the definition of soft power, which is not required, because in a way it is very understandable कि हमारा जो मन मस्तिष्क पर प्रभाव होता है, जो नॉन कोअर्सिव होता है, जिसमें मिलिट्री का कोई संबंध नहीं है, न कि आर्थिक संप्रभुता का, मतलब आर्थिक ताकत का कोई संबंध है, मगर आपकी संस्कृति के माध्यम से, आपके संगीत, आपके नाटक, आपके महाकाव्य, आपकी जायकेदार मसालों की, या कुल मिलाकर आपकी culinary और क्यूजीन ट्रेडिशंस की खुशबू, आपका आर्किटेक्चर, आपका सिद्धांत, आपके तत्वज्ञान, आपकी फिलॉसफी, इन सब का जो परिणाम है, दैट क्रिएट्स सॉफ्ट पावर एंड दैट हेल्प्स यू मेक योर कंट्री, योर सिविलाइजेशन, योर कल्चर understand the global community in a much better way. And there are no boundaries of political and geographical or physical boundaries for the soft power to reach a destination. Not at all. And I'll cite an example, and I'm sure many of the viewers and maybe yourself as well must have visited Beijing. When I first visited Beijing, I realized that perhaps I'm in a Mandarin America. In the sense, except for the language, everything is Americanized. You come across the same Kentucky Fried Chicken and McDonald's and whatnot. Similarly, if I may take the other example, which is that of Israel. When I went to Tel Aviv, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक हिब्रू अमेरिका में हूँ। भारत में यह अनुभव नहीं आता, और विश्व के कई ऐसे देश हैं जो अपनी अस्मिता, अपनी आइडेंटिटी, अपने परिचय को बरकरार रखे हुए हैं, यहाँ तक कि अपनी लैंग्वेज को भी। चाइना ने, इजराइल ने लैंग्वेज को तो बरकरार रखा, मगर बाकी कलेवर आप देखेंगे तो एक अमेरिकनाइजेशन की जो एक बड़ी लहर आई हुई है पूरे विश्व में, उस लहर का वो हिस्सा बनते हमें दिखाई देते हैं। तो अपनी पहचान को बरकरार रखना, ये भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और उस दृष्टि से देखे तो इसमें पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है। अभी चाइना और अमेरिका में क्या मतलब पॉलिटिकल तो राइवलरी है एक दृष्टि से, बावजूद इसके अमेरिका का प्रभाव चाइना में है, और शायद चाइना का भी कुछ मात्रा में अपने अपने। तो क्या अट्रैक्शन था अमेरिकन सॉफ्ट पावर का कि बिना मिलिट्री पावर या बिना हार्ड पावर एक्सरसाइज किए उनका सॉफ्ट पावर इतना अट्रैक्टिव है कि बहुत सारे देशों में वो सॉफ्ट पावर एब्जॉर्ब हो गया इन द लोकल कल्चर? Because of their very smart marketing tactics in a way. संपन्न देश है तो एग्रेसिव मार्केटिंग करना, अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ाना, उनको फैशन का हिस्सा बनाना। और आज हम देखेंगे तो नैरेटिव चलाने वाले जितने सारे सोशल मीडिया है, वो भी तो एक दृष्टि से अमेरिकन कंपनीज के कंट्रोल में है। तो वो एल्गोरिदम्स वगैरह की जहाँ तक बात आती है, वो भी एक था, मगर उससे पहले से भी है। ये तो मैं कोई आज की बात नहीं कर रहा हूँ। हॉलीवुड की जो फिल्में हैं, बिल्कुल हाँ, जो हमारी जनरेशन सब जो जिस पे पले थे, बड़े थे, सो दैट वाज दैट एस्पिरेशनल इंडिया और एस्पिरेशनल यूरोप और व्हाटएवर, वांटेड कि वो डिज्नी की टी शर्ट्स पहने या फिर वो वहाँ के एक्टर्स की तरह लुक वॉक। इन अ वे पीपल काइंड ऑफ इक्वेटेड द आइडिया ऑफ प्रोस्पेरिटी विद द आइडिया ऑफ अमेरिका। जी, ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आ गया। वो सही गलत ये एक बात अलग है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का संबंध केवल आर्थिक संपन्नता से नहीं जोड़ना चाहिए। एक लाइफस्टाइल, हाँ, एक लाइफस्टाइल है, बहुत साधन सुविधा है,
एक दृष्टि से ईज ऑफ लाइफ भी है कुछ मात्रा में, तो उसका एक आकर्षण बन गया। और मतलब लोगों को वो अमेरिका नाम का जो एक मन पर परिणाम निकल कर आया, हम देखते हैं कि कई पीढ़ियां एक दृष्टि से उस प्रभाव से निकल पड़ी और आज भी वो बहुत ज़्यादा बाहर आई है, ऐसा शायद हम नहीं कह सकते। तो सॉफ्ट पावर जो है उसका इन्फ्लुएंस क्या क्या होता है? मतलब कि फॉरेन पॉलिसी पे होता है, डोमेस्टिक पॉलिसी पे होता है, किन चीज़ों पर सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है? आई थिंक इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि जब लोग एक देश को, एक समाज को, उसकी भाषा को, उसकी संस्कृति को जानते हैं और उसमें कुछ आकर्षकता हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप में एक अपनत्व भी बन जाता है। अभी मैं अगर भारत की बात करूं तो हमारे यहाँ के बिग फैट वेडिंग्स जिसकी बहुत चर्चा होती है, आज मैं आपको बताऊं कि फ्रांस में जितने सारे वेडिंग्स होते हैं, अमीरों के होते हैं, उसमें हमारे राजस्थान के कलाकार, चाहे वो कालिया बेली वाला वो डांस है वो करने वाले होंगे, या लोक कला, लोक कथा, लोक नृत्य कहने वाले, लोक वादक है, इनको बुलाया जाता है। और इन लोगों ने, यू मे नॉट बिलीव, इन्होंने फ्रांस में अपने बंगले बनाए हैं हमारे राजस्थान के लोक कलाकारों ने। Why not? हाँ, तो ये प्रभाव है। तो बिफोर इवन इंडियन डिप्लोमेसी एंड इंडियन पॉलिटिक्स एंड एनीथिंग रीच्ड out there, our kalakars, our artists, our artisans for that matter, have already reached there. आप फ्रांस की बात कर रहे हैं, मैं एक प्यू रिसर्च कोट करती हूँ। उसके मुताबिक 68% इंडियन अडल्ट्स बिलीव दैट इंडियन इन्फ्लुएंस हैज़ रिजन इन द वर्ल्ड, बट ओनली अ मीडियन ऑफ 28% अडल्ट्स अक्रॉस 19 अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड थिंक सो। सो इंडियंस थिंक दैट वी आर डूइंग वेरी वेल इन प्रोजेक्टिंग आवर सॉफ्ट पावर, लेकिन काफ़ी सारे मुल्कों में, 19 कंट्रीज में, पीपल डोंट बिलीव इट. For example, 70% of adults surveyed in France, India's closest strategic partner in Europe, expressed positive views of India in 2008. But only 39% of French adults have the same positive views in 2023, a drop of 31 percentage points in 15 years. लेकिन आप कह रहे हैं that there is an increase. Maybe it is not reflected in this, but there seems to be a perception that India is not doing enough for its image. I'll explain. This is a wonderful question, and I must respond to it because it will also help me explain as to what exactly are we lacking and where do we lag behind. देखिए, सॉफ्ट पावर का मतलब केवल आकर्षण नहीं है। भारत के प्रति आकर्षण तो बेहद है। मैं कहूँगा कि जो जो भारत में आता है ना, भारत के साथ एक मोहब्बत हो जाती है। दे फॉल इन लव अनमिस्टेकेबली विथ इंडिया, द कलरफुल कल्चर ओवर हियर, the apparels that we use, our festivals, even our culinary cuisine traditions. Name a particular thing and it has attracted people from all over the world. But attraction is one thing and understanding is different. तो हमें चाहिए कि हमारे प्रति जो आकर्षण है उसको हमें हमारे भारत की संकल्पना, आइडिया ऑफ इंडिया के आकलन में तब्दील करना चाहिए। Unless and until you convert this attraction, this goodwill that India enjoys into a proper understanding of what India is all about, we cannot say that the soft power has been accrued to our account. ये वास्तविकता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, but there is certainly some role played by the media and the academia. Okay. आज वॉशिंगटन टाइम्स और न्यूयॉर्क वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जिस पद्धति से भारत की एक छवि बनाते हैं और जो वास्तविकता है, इसमें बहुत अंतर है। और ये आज का नहीं है। 20 years before, let me tell you, there was a seminar and Sushant Gunatilake, one of the very renowned social scientists from Sri Lanka, has mentioned it, that in South California University, there was a seminar. And you know what was the subject of the seminar? Bride burning and son preference traditions in India. Can you imagine? इस पद्धति से हमारी संस्कृति को बहुत ही बेहुदा तरीके से और बहुत ही अभद्र तरीके से अगर प्रस्तुत करने वाला एक एकेडमिया है, और विशेष रूप में अमेरिका में या यूके में या यूरोप में है, तो हमें तो मतलब दुगुनी ताकत से इसको डिमोलिश करने के लिए काम करना पड़ेगा। But there was
I mean, the point is that है ना हमारे देश में. No, but this was never a part of our tradition. No, it How wasn't. can you? How can you describe it that it is a part of our tradition? And tell me, son preference, I mean preference for a male child, ये दुनिया में कहीं कहाँ नहीं है, मुझे बताइए. सब जगह है. ब्राइड बर्निंग, ये कोई ऐसा थोड़ा ही है कि देखो ब्राइड, जैसे ब्राइड आ जाती है तो उसको बर्न कर दे. आर यू टेलिंग अस लाइक दैट? मतलब दिस इज द हाइट ऑफ परवर्शन. और इसको तो मतलब हमने बहुत कड़ाई से इसको ध्वस्त करने की जरूरत है. दुर्भाग्यवश हमसे वो हुआ नहीं, और आज हम कर रहे हैं इसको. और It जैसे is true. कि आज भी अगर हम देखें तो the headlines which come out is or till 10 years ago it was rape capital of the world. Correct. Now it is obesity capital of the world, diabetes capital of the world. मतलब these are terms which are attached and crime, pollution. These are things which get attached to the name India. But there's more to India is what you're saying. एब्सोल्युटली. और अगर आप जनसंख्या के अनुपात में यहाँ के क्राइम और बाकी सारी गलत बातों का अगर रेशियो देखेंगे तो बाकी सारे जिनको जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं उनसे तो हम काफी अच्छी स्थिति में है. इतनी सारी मतलब आबादी होने के बावजूद भी ये देश बहुत अच्छे तरीके से चलने की कोशिश होती रहती है और कमोबेश वो सफल होती रहती है. इसको तो विश्व के मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लोग भी बड़ा मतलब बड़े अचंभित हो जाते हैं और बड़ी सराहना भी करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिस्टम्स चरमराई गई है, चलता ही नहीं कुछ. ऐसा होता तो वो गीत शायद वो गाता नहीं था कवि की, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी. तो वो तो है ना, हमारी जिजीविषा है, हमारी संघर्षशीलता है. आई वॉज देयर इन जर्मनी सम टाइम बैक, मे बी सम 5-7 years बिफोर. तो वहाँ का एक छात्र जो भारत में आया था, he was telling me that originally I had come only for 3 weeks, but later on I extended my stay for about 2 months. Then I asked him about his impressions, and he was all negative about the impressions. I mean, people breaking the traffic signals, and then so many people at one time on the streets, and the litter everywhere, all kinds of things that you can imagine, he was telling me. तो मैंने पूछा कि इतनी नेगेटिव कल्पना है आपके मन में भारत के बारे में, तो फिर भी आपने अपना स्टे एक्सटेंड क्यों किया? तो विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस ही सेड कि सर, इफ़ यू मूव अराउंड यूरोप, आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ के लोगों की आंखों में कोई रोशनी नहीं है. भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति की आंख में एक आशा की किरण है, एक रोशनी है, एंड दैट इज इंडिया. तो ये जो हमारे समाज की ताकत है, अंतर्निहित है, इनहेरेंट टू आवर कल्चर एंड आवर सोसाइटी, दैट हैज केप्ट अस मूव फॉरवर्ड. इसको हमें समझाना पड़ेगा, ये अपरेंटली समझ में नहीं आएगी. Is that something to be appreciated, that there is hope simply because his daily life is such drudgery of the poor person on the streets? The only way to survive is through hope. I don't know whether it is a positive आप देख रहे हैं, और वो करे भी क्या? अगर होप नहीं है तो वो सर्वाइव कैसे करे? नो, बट ऐसी स्थिति विश्व के कई समुदायों में है, मगर वहाँ होप नहीं है. यहाँ होप इसलिए है क्योंकि यहाँ श्रद्धा है. यहाँ जो मंगल है, जो अच्छा है, जो शुभ है, उसके प्रति एक श्रद्धा है. देखिए, ये देश जीवंत रहा है, चलता रहा है. यहाँ की सिविलाइजेशन सदियों से, सहस्राब्दियों से चलती रही है, तो इसका कारण श्रद्धा है. आई एम श्योर पीपल हैव रेड अबाउट Mark Tully's book, No Full Stops in India. And there he has very beautifully mentioned this, that the Western elite and their counterparts in India generally try to, I mean, I'm telling the substance of what he had said. I'm not quoting him per se, but he has beautifully said that the Western elite and their counterparts in India try to rush to draw the conclusion. And instead of raising the consciousness of the common people and taking it to higher and higher level, they try to draw conclusion, put a full stop in a land where there are no full stops. Right. So let's come to the aspect which you were talking about, Shraddha, culture, all these things. Vasu-dhaiva Kutumbakam. Now, that is a key feature of Indian superpower. It was also mentioned by the Prime Minister recently in G20. Explain that term and how that term was
used during G20 and how it is used in Indian foreign policy? See, in a way, when we decided to have that motto, Vasu-dhaiva Kutumbakam, in English it was loosely translated as one earth, one family, one future. And very rightly so. I mean, nobody can deny it, although there were, I am told, some countries had some reservations about the motto itself. But then nobody could voice their opposition because, I mean, how can you disagree with the fact which has been stated over there? That is as simple as that. तो इसका मतलब ये है कि ये विश्व समुदाय को एक एहसास दिलाने की बात थी कि वी कैन नॉट लुक एट द ग्लोबल कम्युनिटी इन ए डिसजॉइंटेड मैनर. किसी भी देश में कुछ भी होता है तो उसका पूरे विश्व समुदाय पर परिणाम हो रहा है. चाहे यूक्रेन और रूस के संघर्ष की बात करें या अभी जो इजराइल और हमास के बीच चल रहा है उसकी बात करें. तो इसका उसी पे मैं पूछना चाहती थी कि इन सच अ फ्रैगमेंटेड world today, whether it is Ukraine or whether it is Israel Hamas, वहाँ पे कहाँ आप unity देखते हैं? No, that is our prescription, ma'am. Okay. ये हमारी धारणा है कि इस भाव से ही काम करना पड़ेगा. There is no other go absolutely. Unless and until we realize deep down in our minds and in our thinking that we are one world, we are one family because we have one common future. अगर इस भाव से हम नहीं काम करेंगे तो हम सभी का जो एक समुत्कर्ष होना चाहिए, जो एक अभ्युदय होना चाहिए, उससे हम मिलो दूरी रहेंगे. Because most countries think like that. No, me and mine. मैं, मेरा क्या? India never. This beautiful wooden stand from Nestro's keep my house clutter-free and beautifully organized. Made from teak wood, it's absolutely long-lasting and helps me organize my cutlery and table accessories like mini sauce bottles and tissues. It's a great way to keep my space clean and organized, and oh, it's so portable. And not just that, I can use it to organize my stationery and desk accessories, giving the space a chic look, and it's so clutter-free. A great product. Thanks to Nestro's. देखो, मैं अभी हमने यूनाइटेड नेशंस में इसी थीम पर एक कॉन्फ्रेंस की सम मंथ बिफोर. तो उस कॉन्फ्रेंस का भी यही थीम था और उसमें हमने कहा, जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल्स आफ्टर एग्जांपल्स, बट व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल पीस कीपिंग, यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस है, उसमें सबसे तगड़ी, सबसे जिसको मैं कहूँगा कि सब्सटैंशियल ऐसी अगर किस देश की कामगिरी है, किस देश का अगर उसमें योगदान है, तो वो भारत का है. कहीं भी उधर लीबिया में या अन्य मध्य पूर्व के देशों में जब जब संघर्ष हुआ, लोग अटक पड़े, तो अमेरिका ने भी हमारे लोगों को कहा, भारत सरकार को, सुषमा जी हमारी मंत्री थी उस समय, कि क्या आपने लोगों के साथ हमारे लोगों को भी रेस्क्यू कर सकते हो? और हमने किया. सी, इंडिया हैज बिकम ए ब्रांड ऑफ वसुधैव कुटुंबकम एंड नॉट फॉर नो रीजन. टेक द एग्जांपल ऑफ COP27. भारत सरकार ने ये भूमिका ली कि बड़े जो अमीर देश है वो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए और उसकी भरपाई करने का काम आप डेवलपिंग कंट्रीज पर छोड़ दे. ये नहीं चलेगा. वी आर स्मॉल कंट्रीज परहैप्स, वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, नो मैटर, बट देन यू कैन नॉट जस्ट पुट द ओनस ऑन अस एंड यू डू एनीथिंग इररिस्पॉन्सिबली, विच इज व्हाई द प्राइम मिनिस्टर mooted the idea of lifestyle for environment. क्योंकि इनकी जीवन शैली जो है हमारे सो कॉल्ड अमीर विकसित देशों की, वो पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा रही है. ओवर कंजम्पशन. बिल्कुल. तो ये बात तो हम ही ने तो कही ना. तो हमें चूंकि पूरे विश्व समुदाय को एक परिवार मानते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं. टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म. विश्व में अमेरिका जैसा एक मॉडल है, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म. दूसरा एक पुराना सोशलिस्ट मॉडल है, एक्सट्रीम कम्युनिटी ओरिएंटेशन या कलेक्टिविज्म. हमने उसका बीच का रास्ता अपनाया है. वी अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल. हमारे शास्त्रों ने कहा है, प्राप्ते तु षोडश वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत. व्हेन अ बॉय और अ गर्ल अटेन्स द एज ऑफ 16, द पेरेंट शुड ट्रीट हिम और हर not as son and daughter but as a friend. This is our way of approaching towards individual identity, individual space, privacy, individual choice.
But you cannot stretch it too far. After all, we are a part of a whole. हम एक परिवार के अंदर रह रहे हैं, इसका तो एहसास रखना ही पड़ेगा। तो ये जो भारतीय संस्कृति की जो एक सैद्धांतिक नींव है, आवर फाउंडेशनल वैल्यूज, मैं पार्लियामेंट में था और लोग जो पार्लियामेंट में जाते हैं उनको पता है कि वहाँ पर स्क्रिप्चर्स लिखे हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। दैट इज द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। आज जो भी विश्व में चल रहा है कि मैं ही श्रेष्ठ, आइडिया ऑफ सुप्रीमसी, हमने कभी उसको प्रश्रय नहीं दिया। वी सेड एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, विच इज स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। बट देन this idea of spiritual democracy will have to be accepted by one and all. What does the term spiritual democracy mean? Spiritual democracy means, like in democracy, every other individual is equal. So in spiritual democracy, every way of worship has an equal standing. There is no monopoly, there is absolutely no hegemony. We never say that my way or highway. हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे रास्ते से जाएंगे वही ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे, बाकी है वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे, बिकॉज दे आर इनवैलिड। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमने तो कंकर में शंकर देखा, जैसे अटल जी ने बहुत अपने प्रसिद्ध वाक्य में कहा। तो ये जो धारणाएं है, ये जो श्रद्धा है, इसके कारण हम वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करने के अधिकारी बन जाते हैं, बिकॉज वी हैव लिव्ड दिस फिलॉसफी। I'm going to come to the part of, spiritual democracy again. But before that, what we were talking about, the image of India abroad. So some of us who've got friends and cousins who went in the 70s, he went in the 80s. And they used to always be embarrassed about when people would say, अच्छा तुम यहाँ पे आए हो रहने के लिए, हाँ तुम्हारे कंट्री में गरीबी इतनी है, you come from an underdeveloped nation. Today the same NRIs turn around and feel proud that India has achieved so much, whether it is Chandrayaan, whether it is any other sphere. I don't even want to start listing the achievements, but there is a sense of pride. There are also many Indians who want to come back and be part of the India story. Now, is that solely because India has become economically a strong nation, or is it a combination of that and India's soft power? It is a combination, beyond doubt, because the way we have asserted under the leadership of Prime Minister Modi, whether it is paying our neighboring country, Pakistan for example, in their own coins, teaching them a lesson, not allowing them to just do any mischief with us and get away with it. ये जो हमने किया है, एक दृष्टि से हमने पराक्रम का परिचय दिया है। चांद्रयान वगैरह सारे विषयों को अगर मैं देखूं तो हमने प्रतिभा का भी परिचय दिया है। तो पराक्रम है, प्रतिभा है, हमारे परिश्रम भी है। पूरे कोरोना काल में हमने क्या देखा? परिश्रम ही तो देखे। हमने जिस पद्धति से वैक्सीन मैत्री स्थापित की है, क्या इस पर किसी को नाज नहीं होना चाहिए? तो इसके कारण हमारे एनआरआई बंधु, हमारी बहनें अब गर्व का अनुभव कर रही है। तो जब नेतृत्व इस पद्धति से अनअपोलोजेटिकली, और ये इसमें कोई नया नहीं है, ये तो हमने करना ही चाहिए था। पीएम साहब ने एक बार जापान में जाते हुए कहा था कि मैंने वहाँ के राजा साहब को भगवद गीता की एक प्रति दी, और वहीं जापान में भाषण कर रहे थे। तो मुझे पता नहीं भारत में अब लोग मेरे ऊपर आलोचना करेंगे या क्या करेंगे, बिकॉज दैट हैड बिकम अनफॉर्चुनेटली आवर नेशनल हैबिट to deny our past, to deny our spiritual identity. ये जो निगेटिविज्म था, कोई जरूरत नहीं, अरे हम है ना भाई, क्या आपत्ति क्या है? हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी है। अभी ये सनातन धर्म के ऊपर इतना सारा कर रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं कि ये सनातन का मतलब ही शाश्वत है। द लिटरल मीनिंग ऑफ सनातन इज इटर्नल। तो सनातन कोई केवल एक उपासना पद्धति का नाम थोड़ा ही है। वॉट एवर इज इटर्नल इन दिस वर्ल्ड, इट्स सनातन। मगर वोट बैंक की राजनीति में करने लगे जैसे जो मन चाहे। Because the idea is that the BJP with its idea of Sanatan and with its idea of spiritual democracy is trying to bring about a Hindu Rashtra in this country. Now this is the narrative which one gets to read in the foreign media. Where does the foreign media pick it up? It picks it up from parts of the Indian media and the Indian academia also. जो ये बात start करते हैं, जो बात बोलते हैं, और वो foreign media pick करती है। तो कहाँ पे, where is the falsification in all this?
Hi, I'm Palguni. And I'm Shane Peacock, and you're watching us on Asian Paints, where the heart is. Welcome to our home. We loved that we used muted tones for the house, so it's like a very pastel mushroom. I think this color brings a lot of calmness to us. That's one of the reasons why we had gone for this muted tones. Then I love the accent of the Brass. bronze and the brass, And you know. also, retain I that was accent. thinking of having one of the walls as an oyster grey. We just added as accents in the credenza that is out here. Home is a very personal space to me and to Palguni, and there are certain choices that we have taken which is very personal to us. When you're designing your house, you have to make sure that both take a decision together. A cushion, or it could be a rug, Furnishing, or maybe anything. colour. That's when you know that you made the right choice also. So if you're inspired by our home decor, Go to beautifulhomes.com by Asian Paints. for a lovely style guide. We have not been able to communicate what we are. I mean, I will certainly start by looking into the mirror and turning the searchlight inward in a way. But at the same time, not all the misperceptions are a creation of our own inertia. Some of the misperceptions are wantonly generated by people who are interested in a way, tarnishing the image of India and bringing a bad name to the idea of India. And there are many. There are many. अभी कई म्यूजियम्स में देखता रहा हूँ, मैं जाता हूँ, तो एक म्यूजियम में मैंने देखा कि इंडिया इज द होम ऑफ सेवरल वेज ऑफ वर्शिप एंड देयर आर टू प्रोमिनेंट स्ट्रीम्स. One is Hinduism and the other one is Brahmanism. What kind of canard are you spreading? And who is to contest this, if not we? How can you call Brahmanism a That is what I am saying. मगर ये canard फैलाया जा रहा है. क्यों? क्योंकि हमारी विविधता को विभाजन का आधार बनाने की कोशिशें हो रही है. And we have been saying कि हमारी जो diversity है, that is just, and let me repeat, that is just the diverse manifestation of our innate unity. We are first united, and then that unity gets manifested in diverse way, which is why it is not just unity in diversity, but unity of diversity. ये हम समझाने में जितने सफल होने चाहिए शायद नहीं हो पाए. पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण हो सकता है, कई बार विभाजन के आधार पर वोट बैंक को बनाने की जो कोशिशें होती है उसके कारण हो सकता है. तरह तरह के कारण हो सकते हैं. तो कुछ डेलिबरेट और कुछ इनर्शिया. बिल्कुल, कुछ डेलिबरेट, कुछ इग्नोरेंस मैं कहूँगा. हमारी पार्ट पर इनर्शिया का भी एक हिस्सा उसमें है, जरूर है. तो ये अगर हम ठीक करते हैं और थोड़ा असर्ट करते हुए एकेडमिक कम्युनिटी को बोलते हैं कि what you are saying is far from the facts, and we also through research, rigorous research, establish it very powerfully, then I'm sure we will be able to contest such misperception creators. You know, with relation to Hinduism, we'll get to there. But I also want to talk about, like you said, Hinduism and there is the Brahminical way, there is the Sanatan. There's also the Buddhist circuit. India is a land where Buddha attained enlightenment. The Dalai Lama got refuge in India when he faced persecution. Now, yet when you talk about Buddhism and Buddhist destinations, when you talk to anybody in the world, they'll say Thailand, they'll say Japan, they'll say Sri Lanka. Rarely do they talk about India. हाँ, हमने अभी Buddhist circuit का कर लिया. We inviting people from Southeast Asia. It's been going on for almost 10 years now. But why is it that it doesn't strike people in the world still? Again, inertia on our part. I mean, the previous governments were all very shy of talking about our spiritual traditions. Whether it was Jainism, whether it was Buddhism, whether it was Sikhism, whether it was Hinduism. I mean, simply to, I mean, it was all their hypothecated kind of way of thinking. एक इमेजिनेशन था कि अरे हम इतनी बात करेंगे तो उनको क्या लगेगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं था. हम हमारे प्रधानमंत्री जैसे अब कर रहे हैं कि इजराइल को भी साथ ले जा रहे हैं, पैलेस्टाइन के साथ भी मित्रता हमारी कायम है, हम कर सकते हैं. मगर हमारे देश के कुछ लोगों को क्या लगेगा, इसलिए आप इजराइल से मित्रता ही नहीं करोगे
इसमें कौन सी विजडम है? नहीं, पर बुद्धिज्म से नहीं, किसको तो मैं थ्रेट हो कह रहा सकता हूँ था? नहीं ना, मगर कुल मिलाकर हमारे देश की अस्मिता से जुड़े हुए ये चार धाराएं हैं: हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। Religions that originated from India. इंडिक रिलीजन्स में Indic कहूँ, इंडिक religions, हाँ। ट्रेडिशंस में कहूँगा। इनके बारे में दुर्भाग्यवश हमारे देश में पुराने समय में कोई असर्शन ही हुआ नहीं। कोई उसके बारे में जो भी उसकी गुणवत्ता है, जो भी उसका योगदान है, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, महावीर जैन हो, गुरु नानक हो, इनके बारे में जितने अच्छे तरीके से हमने विषय को प्रस्तुत करना चाहिए था, हमने किया नहीं। फॉर एग्जाम्पल आसियान वॉज एन एरिया जहाँ पे जब समिट्स होती थी, वहां पर हमारे बुद्धिस्ट सर्किट को बहुत ज्यादा वी शुड हैव गिवन इंपॉर्टेंस, वी शुड हैव स्ट्रेस्ड ऑन दिस इन ऑल दोज आसियान समिट्स। In the 72-year history of Indian Council for Cultural Relations, which I am heading these days, it was for the first time that we could have a Buddha Bhumi Vandana Yatra involving some 13 countries and 30 delegates who were all young Buddhist scholars. अभी हम बुद्धिस्ट स्टडीज में जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ऐसे स्कॉलर्स को डेकोरेट कर रहे हैं। ये तो बरसों पहले करना चाहिए था जी। अभी हिंदू बुद्धिस्ट डायलॉग हुआ, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, भारत सरकार का संस्कृति विभाग, इनके माध्यम से, तो कभी मंगोलिया से, कभी थाईलैंड से हमारे डायलॉग उस स्पिरिचुअल धारा में भी चल रहे हैं। Why should we be shy about it? And ICCR also does and has been doing for quite some time, Indian Council for Cultural Relations, which you head, about how Ramayana is linked. Yes. तो उसके बारे में वही है, मतलब good that you raise this subject because I have a particular example to share with you. See, after 2015, ICCR has been engaging itself in conduct of Ramayana Festival, which is an international festival. And we invite troops from all those countries where Ramayana is a part of their tradition. तो उसमें म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बहुत सारे देश हैं। उसमें ब्रुनेई भी आया एक बार। तो ब्रुनेई से कोई आएगा हमें लगा नहीं था। हमारे जो अधिकारी काम कर रहे थे उनको लगा कि 100% इस्लामिक है, अनलाइक मलेशिया और इंडोनेशिया। सो दे वर ए लिटिल सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज. And during the recess, when the Brunei troupe presented a wonderful skit on the theme of Jatayu Vadha, which is an important story as part of Ramayana, तो जब बातें हो रही थी कि हमें तो लगा नहीं था कि आपके यहाँ से कोई आएगा, तो ब्रुनेई के उस कला पथक का जो प्रमुख था उसने कहा कि बॉस, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वी हैव चेंज्ड आवर रिलीजन, नॉट आवर कल्चर. मगर इसका हमें एहसास ही नहीं था. हम तो बेकार का इन लोगों को क्या लगेगा, उन लोगों को क्या लगेगा, इसी कवायद में अटके रहे. Why is that just brings me? Why is Jatayu such an important figure? I know. In Southeast Asia. मैंने वहाँ इंडोनेशिया में भी देखा, बाली में भी देखा है. Jatayu is very significant and in India. Not many people, if I was to take a camera right now and go and ask Jatayu kaun hai, not many people will know, frankly, you know, a figure from Ramayana who people have mostly forgotten. And when you go to these countries, you realize that there are so many parts of Ramayana and of Mahabharata which these fables have got lost. You know, why Varuna is not seen, you don't see temples or you don't see idols of Varuna at all. You know, in India. Whereas in these countries, Varuna is very much worshipped. Jatayu is worshipped. There are big figurines. So it's interesting. Yeah, it is interesting and requires, it merits deeper research why there is so much of kind of love and affection, and not just love and affection, but reverence for the story of Jatayu and the kind of struggle he waged against Ravana, for that matter, in his bid to save Sita or to rescue her for that matter. तो ये बिल्कुल मतलब, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या होता है, इंडिया में एक नरेशन होता है, जो रामायण और जो महाभारत का इंटरप्रिटेशन लार्जली नॉर्थ में होता है, वो ऑलमोस्ट टिल सेंट्रल इंडिया वैसे ही होता है, विद माइनर चेंजेस एज यू गो फर्दर साउथ, और इफ यू गो ईस्ट a little more towards Shakti worship, you know, a little more towards Mother Goddess, towards Western India. ये सब होता है थोड़ा बहुत. But certain stories have completely got lost. Like I still remember in Vietnam, there was this large urn
और उसमें एक उधर था एंड इट आई जस्ट लुक्ड एट इट एंड आई सेड ओ इट लुक्स लाइक द मैरिज प्रोसेशन ऑफ इन रामायणा और समथिंग लाइक दैट. इट लुक्स लाइक द राम सीता and you can see all that. So then they said see that and look under that. So I looked under that. I said वो तो वही लग रहा है. Said no, that is Shiva Parvati. Oh, really? And it is the wedding of that. So I said एक में आप शिव भी और राम, you don't see that in India all that much. You don't see both the gods in one figurine. Correct. So they said what happened was that the carvers were brought from India. They were going to be there for 4 years or 5 years during the process of when the temple was going to be constructed. In that 4 or 5 years, they didn't restrict themselves कि ये विष्णु टेम्पल है तो हम विष्णु ही लगाएंगे, या ये शिव जी का एक मंदिर है उसमें सब कुछ आ जाता था. नहीं, वो तो है. और हमारे यहाँ इंटीग्रेशन भी है ना, मतलब हाँ. हमारी आस्था में, हमारी श्रद्धा में, in our ethos, both the things are so very intertwined that although both the epics are in a way different, period wise also they are in different brackets. Yeah, exactly. But still, in our consciousness, they are somehow brought together. Yeah. That has happened. I mean, And for also example, the way Shiva is depicted, the Ishana element Yeah, of yeah, it, you know, the long hair and the mustache, and very different from, and it's that Rudra and that aspect of Shiva, which you see in, say, in the Korean temples, which you see in the Japanese temples, which you see in Indonesia. It's completely different from what you see in most of the Indian temples in central India. Very interesting. that is true. Yeah. These are different interpretations and different perceptions also. Yeah, in a and way. then to come back to the Ramayana circuit which you were talking about, so when you see Ramayana depicted on stage, say in a Manipuri style, or if you go further in a Vietnamese style, you go further, even Korea for that matter. In fact, if you could even tell Korea's connection with Ayodhya, right, that also is a very interesting. बिल्कुल. तो अयोध्या और कोरिया का कनेक्शन और वहाँ की महारानी के संदर्भ में जो भी, मतलब हमारे यहाँ भी जानकारी है, वहाँ भी जानकारी है, लोगों में अपार श्रद्धा भी है. ये बात बिल्कुल सही है. और इसलिए इन सारी चीज़ों के आधार पर एक मिला जुला भाव विश्व, जिसको हम इथॉस बोलते हैं, वो बना हुआ है. एंड देयरफॉर मेनी टाइम्स इट comes to my mind that we have several groupings like G20, G70, G this, G that, and maybe BIMSTEC and SARC and whatnot. Perhaps we can also float another grouping, which is Rama and Mahabharat countries. Because there are so many countries that are linked to the stories of Ramayana and Mahabharat. You will not believe, I was in Baku few years before, which is the capital city of Azerbaijan. And right in the outskirts of the capital city of Baku, there is a fire temple. और वो मैं देखने के लिए गया. Parsi fire temple? No. It is Hindu fire temple. Okay. और कहानी बताते हैं कि दक्ष और सती, इनके बीच जो भी हुआ, और सती के टुकड़े टुकड़े करके उनको इतस्ततः एक दृष्टि से फेंका गया, तो उसमें सती के अंग का एक भाग, एक हिस्सा बाकू में गिरा. Like a शक्तिपीठ. तो वो एक शक्तिपीठ माना जाता है. और वहाँ पर बीचों बीच अग्नि मंदिर है, और जो 4 दीवारी है उसके ऊपर बहुत सारे ऋषि मुनियों के चित्र भी है. वक्रतुंड महाकाय इंस्क्राइब किया हुआ है, गणपति है, बहुत सारी चीजें हैं. Nobody would have imagined that the message of, in a way, Indian scriptures has gone right up to Baku. Even in Trinidad and Tobago, the indentured workers who went, or to South Africa, they have their Ramayan Path which happens and things like that. So these are connections in. So I'm of course going to come so that, you know, there is also a view that which you were talking about when you spoke about Brunei, that when it comes to ICCR, when it comes to you know, government bodies which promote Indian culture, it tends to be the Hindu culture. There is also a Parsi culture, there is a Buddhist culture, there is a Sikh culture, there is an Islamic culture, very thriving minorities and their religion. Is there enough done to promote that aspect also in rest of the world? Yes, of course. For example, जब गुरु नानक जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया गया, तो विश्व भर के युवा सिखों की एक हमने यहाँ पर एक यात्रा, तखत दर्शन यात्रा आयोजित की थी.
और उनका 2 दिन का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी किया कि सिख गुरुओं ने इस देश के लिए क्या किया है, विश्व समुदाय के लिए क्या किया है, वो उनको बताने का काम. एंड लेटर ऑन वी टुक देम टू अमृतसर, टू पटना साहिब, टू नांदेड़, and everything was done by ICCR. Similarly, I already have spoken about the Buddha Bhumi Vandana Yatra, which is also a part of our culture, and therefore that requires to be projected, that requires to be talked about. When it comes to Islam, सूफ़ी म्यूज़िक के बारे में विशेष रूप में हम ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि बाकी सारी बातों में विश्व समुदाय में काफ़ी आकलन है, चर्चा भी है, बट सूफ़ीज़म एंड सूफ़ी म्यूज़िक essentially is something which has a stamp of India. Tell me, what is different about Islam in India as compared to Islam in the rest of the world? If you can club rest of the world in one grouping. Well, I would only say, if not 100%, because I am not that way a student of theology or... but you have to project Indian... Yeah, that is true. So whatever I have observed all through these years is that in India, thanks to the culture of spiritual democracy over here, Indian Muslims are comparatively more accommodative to different cultures. I would say comparatively, of course. And therefore, there are many examples of how some of the Hindu traditions have been, in a way, emulated by the worshippers of Islam here. तो ये तो है. और उस दृष्टि से देखे तो ये जो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती है, उसको भी कहीं ना कहीं मान्यता दिखाई देती है. अभी मैं कश्मीर गया था, तो वहाँ पर हमें लाल देद के बारे में पता है, लल्लेश्वरी के बारे में. तो उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ चमत्कार जिस जगह पर हुआ था, पामपुर के अंदर एक छोटा सा मैदान है जहाँ पर एक कुआं है और उसके साथ जुड़ी हुई कई कहानियाँ हैं. तो मुझे वो स्थान देखना था, तो लोकल हमारे कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया था. तो जो एक मुस्लिम मौलवी वहाँ पर आए कहानी बताते हुए, तो उनके आंखों में आंसू थे लल्लेश्वरी के बारे में. एंड लल्लेश्वरी इन अ वे सिम्बोलाइजेस द कॉन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक इन अ वे what I should say ethos, because she has earned place in the common ethos of both the communities. But her story got lost over the years. I know. We need to revive, because these are the symbols of our unity in diversity, or unity of diversity, if I may put it that way. और इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से, अभी मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि जैसे ईरान के अध्यक्ष आए थे 2018 में भारत, तो उस समय जो चर्चा हुई होगी उनके हमारे देश के नेताओं के साथ, उसमें एक विषय आया कि महर्षि पाणिनि इज द ग्रेट कनेक्टर बिटवीन people who speak Persian and people who speak Sanskrit, because he is the grammarian who has created the linguistic structure of both these languages. And therefore it was decided that we should do something to commemorate the contribution of Maharshi Panini as a grammarian. In Iran? In Iran. And therefore ICCR, we have a center over there, Swami Vivekananda Cultural Center in Tehran. So they were asked to take initiative, and with the help of the University of Tehran, we organized a 2-day conference on Panini's contribution as a grammarian. And I was there. I went and saw the Tehran University Vice Chancellor. He had asked me to join him for a breakfast. And during our discussion, he asked me one pertinent question. He said, Mr. Sahasrabudhe, in Tehran University, we teach Upanishad. Tell me, in which Indian university Upanishad is being taught? Upanishad is taught in Tehran? Yeah, that is what I am saying. And it has come from the horse's mouth, the Vice Chancellor himself telling me. That must have been very awkward for you. No, awkward in the sense, immediately I had no answer. Name of a university to be cited over there. Although I know that there are many universities, majorly in South India, in Pune, or in many such places where Upanishad is a part of their syllabus. Okay. But then immediately I had no answer. I mean, I didn't expect this kind of a question will come, and that too in Tehran. तो ये तो है. तो कई बार जो होता है ना कि हमें ही पता नहीं कि हमारी strength क्या है. And also a lot of our perception about certain countries is based on a Western perception. Precisely. So एक बार हमने सोच लिया कि ईरान ऐसा है, तो माइंड में वो बैठ गया, और वो बिठाने वाला होता है
वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जैसे ब्रुनेई के बारे में कहा कि हाँ इस्लामिक है, नॉट मेनी पीपल वुड नो द कनेक्शन दैट इट इज बियॉन्ड दैट, राइट? नाउ दैट कम्स टू द पॉइंट इज दैट स्टोरी टेलिंग, unless you tell your own story, nobody will know about it. Precisely. So where have we been lacking, and what are the changes that are happening now? See, we have been lacking in insofar as the scholarship about India, whether Indology or whether contemporary India studies or what they call it South Asia studies are concerned. We need to overhaul we need to initiate a process where the entire syllabus is overhauled. In fact, ICCR has been conducting international conferences on Indology, and I have mooted the idea that time has come that we need to talk about new Indology. Where is Indology taught? Many countries in Europe, essentially. Okay, I'm talking about India, sir. In India, Indology as a subject is not so very commonplace, I understand, because we teach other aspects of Indian history and Indian culture for that matter. But all things put together, what comes as, loosely I am saying, there is no kind of a very strict definition of it, but in countries like Latvia, Lithuania, all the Baltic countries, or even in Switzerland, for example, there are people who run the departments of Indology. So, time has come that we should shape Indology afresh, the very content of Indology, and we should be talking about the contemporary India as well. See, whenever people discuss India, generally speaking, they talk about the medieval history of India. The ancient history is forgotten. Today in Delhi, we see all kinds of roads, and till recently there was Aurangzeb Road as well. But there is no Harshavardhan Road. There is no Chandragupta Maurya Road. Why? There is no Samudragupta Road. There is no Mahaji Shinde Road. Why? Mahaji Shinde was, in fact, kind of ruling this capital city for 30 long years, between 1772 and 1802. मगर हम भूल जाएंगे उनको. ये जो विकृत मानसिकता है ना, कि उसके कारण हमने ही हमारी इंडोलॉजी को बहुत संकीर्ण किया, बहुत सीमित रखा, जिससे हमें उभर कर आना चाहिए और कंटेम्पररी इंडिया की भी कहानी लोगों को बतानी चाहिए. Because abhi tak to in the program we've only been talking about projecting India's soft power, but it is important, like you were saying, to realize it yourself. How can you project it without realizing? Bakhtiarpur was the village, and I went and asked in that village, I took the camera and I went and said Bakhtiarpur hai naam, and who is who, do you know against whom, and do you know what he did? They didn't know. Isi row mein, there is Som Vihar right out here, which is, I said, do you know why it's called Som Vihar? Not many people know about Major Somnath. So the point is, there is no curiosity to know more. It's everywhere. It's like when you talk about people in Delhi, you ask, आप ग्रेटर कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश, कैलाश कॉलोनी में रहते हैं, कैलाश कहाँ पे है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, वेयर? दे विल से साउथ दिल्ली. नो, कैलाश कहाँ पे है? एक्चुअली कैलाश कहाँ पे है? At least if I take the camera and ask, I'm 100% certain, maybe 20% people will know कि कैलाश कहाँ पे है. I'm sure in the comment section people say, आपको नहीं पता तो आप समझते हैं सबको नहीं पता. But that's not true. It does happen. So I think to a large extent, the country is at fault for not one, having pride about our own culture, and two, when you don't have pride, you don't want to know about it. The desire or the curiosity. I know. I mean, unfortunately, Smita ji, I would say that to be patriotic was considered as to be retrograde. That was somehow filled in our minds कि देशभक्ति जैसे कोई बुरा शब्द है या बुरी संकल्पना है, उसको एकदम से जिंगोइज्म वगैरह इस तरीके से शब्दों से बताया गया. And therefore, the ignorance continued, and there are several cases where we can say that people don't know that they don't know. और इससे अधिक दुर्भाग्य की स्थिति नहीं आ सकती. ये वास्तविकता है. तो जैसे अभी मैं आप उसको बख्तियारपुर की बात कर रही है. Do you know, in Maharashtra, and I'm sure everybody knows about the history of Chhatrapati Shivaji Maharaj, and the well-known Pratapgarh battle, and especially how Chhatrapati Shivaji Maharaj killed Afzal Khan, who had come from Golconda
ऑन ए काइंड ऑफ ए वॉर कैंपेन सॉर्ट ऑफ। तो वो जो मुहिम पर आया तब उसको अंदेशा हुआ था कि जो उसकी 62 पत्नियां हैं वो जिंदा नहीं रहेगी और वो जिंदा नहीं रह पाएगा, तो इसलिए उन 62 पत्नियों को 62 वाइव्स उनको उसने मार गिराया बिफोर इवन सेटिंग आउट। Shivaji Maharaj was just an excuse. He just wanted to maybe Sorry, that's an aside. वेरी सैडली उन 62 महिलाओं की जो उसकी पत्नियां थी उनकी समाधि, I mean, I am shocked to know the word that samadhi has been used for that. वो वहाँ पर गोलकोंडा में है and it was converted into a national monument. Can you believe? So they died before he died. Yeah, he killed them. Yeah. With the idea that he is going to. Correct. And still there is a decorated kind of a structure over there which is called as samadhi. And whereas मतलब उसकी बर्बरता के लिए एक मिसाल है। तो बर्बरता को ही हमने इतना उत्तेजन दिया। और जो महारानी तारा रानी, जो छत्रपति राजाराम की पत्नी, जिन्होंने स्वराज के लिए इतना संघर्ष किया, उनकी समाधि नहीं थी, अब सरकार कर रही है। मगर ये मानसिकता थी वहाँ प्रतापगढ़ में। अभी महाराष्ट्र में जो सरकार अभी है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की, उन्होंने इसको बंद किया। किस चीज़ को? वहाँ पर अफजल खान की भी, एंड आई एम यूजिंग द टर्म, समाधि है। हम स्कूली बच्चे थे, प्रतापगढ़ पर गए थे, मैं 7वीं कक्षा में था, तो हमें बताया गया कि ये अफजल खान की समाधि है। कैन यू इमेजिन? और वहाँ पर पता नहीं क्या क्या होता है और किस पद्धति से अफजल खान का महिमा मंडन किया जाता है। इज इट नॉट वोट बैंक पॉलिटिक्स? उनको क्या लगेगा? तो यही चलाया गया हमारे देश में, और इसके कारण विकृत और भ्रांतियों का एक जाल इस पद्धति से फैलाया गया, वेयर इन वी केम इनटू ए वेरी सॉरी स्टेट ऑफ द थिंग्स वेयर वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। I was heading the Parliamentary Standing Committee on Education and we did a good report, I would say, on textbook reforms. तो टेक्स्ट बुक रिफॉर्म्स की जब हम लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे, यहाँ गुड़गांव में रहने वाला एक 7वीं कक्षा का बच्चा, and he was perhaps he made a history by deposing before the committee. He was the youngest person to depose before a parliamentary standing committee, and he said that we have been fed to learn about Akbar and Aurangzeb in so many paragraphs, and about Rana Pratap there are just 4 lines, and Chhatrapati Shivaji just 5 lines. So there's also another view which is important in a democracy. Every view has to be taken, that this rewriting of the textbooks, rewriting of history, what you are saying is that the wrongs of the past are being corrected, whereas there is a large group which feels that you are trying to negate or erase a part of history which was there, which happened in the country, and you are bringing in the Hindu history to the forefront. See, जैसे मार्केट की परिभाषा में करेक्शन आता है ना, जब बेकार का मतलब किसी शेयर को बहुत ज़्यादा चढ़ाया बढ़ाया जाता है, तो एक बार करेक्शन आता है तो वो शेयर का भाव भी उतर जाता है। ऐसा ही हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री रिक्वायर्स टू बी रिविजिटेड, एंड इन द हिस्ट्री यू विल कम अक्रॉस सेवरल सच एग्जांपल्स वेयर हिस्ट्री हैज बीन रिविजिटेड. This revisiting, reassessment, re-evaluation is a part of our scholarship in a way. Like it's happening in America, हाँ, but बिल्कुल colonialism. सब जगह होता रहा है। तो इसमें अगर आपने भारत के एंशंट हिस्ट्री को दबाए रखा, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि यहाँ पर औरंगजेब रोड था अभी तक, अकबर रोड है, और पता नहीं शेर शाह रोड और क्या क्या रोड है, मगर चंद्रगुप्त रोड नहीं है, यहाँ पर हर्षवर्धन रोड नहीं है, यहाँ पर समुद्रगुप्त रोड नहीं है। ये क्यों नहीं है? तो बना सकते हैं why erase औरंगजेब रोड? हमने कहा इरेज केवल औरंगजेब का किया, बिकॉज बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन यू कैन नॉट कॉल हिम ए हीरो ऑफ इंडिया। जिस बर्बरता से उन्होंने काम किए हैं और जिस पद्धति से इस देश के स्वाभिमान को कुचलने की कोशिशें की है, वी सर्टनली कैन नॉट, एंड दैट वाज ए प्रोजेक्ट लॉन्ग ओवरड्यू। अच्छा है कि वो इस जमाने में हो गया। तो मगर हमने उस पद्धति से शाहजहां रोड को मिटाया नहीं है, अकबर रोड को नकारा नहीं है। ठीक है भाई, दे आर ए पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। तो हमारी भूमिका बहुत संतुलन की है, बैलेंस की है, सभी को सम्मान देने की है, बहुत डेमोक्रेटिक है। अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय की बात करिए, ये क्या मतलब, वॉज इट रिक्वायर्ड दैट वी हैड टू हैव ए गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, wherein the idea of respecting the contribution of all the prime
prime ministers could be recognized and properly established. क्यों केवल एक का ही महिमा मंडन किया जाए? क्या वजह है इसमें? क्या लॉजिक है? ये क्या डेमोक्रेसी की जो ग्रेन ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है उसके अनुरूप है? क्यों नहीं चंद्रशेखर जी को भी सम्मानित किया जाना चाहिए? क्यों नहीं देवेगौड़ा जी का भी नाम हमने लेना चाहिए? नरसिंह राव, उनको तो यहाँ पर अंत्य संस्कार करने की इजाजत नहीं दी गई। तो अब जब समय बदला है तो हम तो एक करेक्शन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। हम जिनके ऊपर अन्याय किया गया था उनको न्याय दे रहे हैं। So does that mean erasing anything and everything that Pandit Jawaharlal Nehru did for this country? Not at all. I will certainly appeal through this particular podcast to the viewers that please go and visit the Pradhan Mantri Sangrahalaya, and you will find the way we have, and since I am a part of the executive committee of Pradhan Mantri Sangrahalaya, I can say it with enough confidence that the way we have projected Jawaharlal Nehru and in a way commemorated his contribution, I think is far too superior than what earlier regimes had done through the Nehru Sangrahalaya. तो ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ पर इंदिरा गांधी जी के बारे में भी है, उनके अच्छी बातों का भी वहाँ पर गुण वर्णन है, लाल बहादुर शास्त्री का भी महिमा मंडन है, राजीव गांधी ने जो काम किया उसका भी अच्छे तरीके से उल्लेख है, मनमोहन सिंह के बारे में भी है। क्यों नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए। Okay. Sir, let me come to the RMP Institute, which you impart leadership training. It's associated with the BJP. So is it an extension of the RSS training module which you do out there? Well, yes and no, because it is not exactly what RSS is doing. See, there is a history to that, and I am sure you would realize the importance of it. See, world over, if democracy is not rising to the expectations of the people, one of the reasons is that our political leaders, especially the elected representatives, are failing the idea of democracy. Since they are not able to perform, they are not able to deliver the goods, deliver democracy for that matter. People are becoming disillusioned with the idea of democracy. And I'm not saying this in India, but majorly in those countries which had earlier a communist autocratic regime, like several former USSR countries. In most these countries, and there are researches available, where people are disillusioned by the post-Soviet regimes, although they are democracies. And their view is that these democracies have not served anything For to the our people. plate and has not brought any new value addition to our lives. तो ये क्यों हो रहा है? Because of the inability of the elected representatives. ये inability क्यों है? क्योंकि चुनकर आना यही एकमात्र क्राइटेरिया है। क्षमतावान होना ये तो क्राइटेरिया नहीं है। चुनकर कब आप आते हैं? जब आप जनप्रिय हैं। But then popularity is one thing and ability to govern is a different thing. So those who have established their popularity by way of getting elected, who will take care of their human resource development? The answer is Rambhau Mahargi Prabodhini. And not just Prabodhini. I am not saying this is only for BJP. In fact, the institution has now earned such a name by the blessings of all our seniors that many people belonging to other ideologies and other political parties also knock our door and request us to conduct capacity building programs for their elected representatives. So when did you realize that the country needs this? This was realized by great thinker, politician like Pandit Deen Dayal Upadhyay. And the idea, the germination of the idea of or the concept behind Prabodhini comes from Pandit ji. It was his idea which was taken up by Rambhau Mahargi, who was a member of parliament from Maharashtra and wanted to dedicate his life for the creation of this institutional setup. He could not because he died at a very early age, relatively at the age of 61 in 1981. So to commemorate his work, people associated with him decided to establish an academy, which is Prabodhini in Sanskrit or in Marathi, and in the name of Mr. Rambhau Mahargi, which is why this Rambhau Mahargi Prabodhini came up. We started working in 1988. I can humbly put it that I was the first functionary of the Prabodhini. Started work in a small room
with just one table and chair. And now we have a sprawling campus in the outskirts of Mumbai in Mira Bhayandar on a 15-acre plot where people from various parts come, even corporates come and undertake their training. And political parties also send their representatives. Many government bodies, including the Women Commission, the SC/ST Commission, they also realize the need for building the capacities of their people. I mean, For leaders of tomorrow, you need strategic thinking, you need conflict resolution, you need decision-making powers, clarity in thought in these matters, how to deliver this for the good of the people. तो इसके बारे में आप समझाइए कि कहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे आप देखते हैं कि दिस पर्सन हैज़ द कैपेसिटी और नॉट, एंड देन हाउ डू यू बिल्ड अ लीडर फ्रॉम दिस? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि जिसको सीखने की इच्छा है वो हमारे लिए स्वागत योग्य है. दैट इज गुड इनफ. हाँ. फिर उसके अंदर 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. नंबर 1, he has to have a concrete answer with him as to why he is there where he is. In public service. Yeah. If I am a political functionary, why am I a political functionary? I mean, do I have any objective? Do I have any goals? Do I have any lofty ideals? Or just because I wanted to be there in public life, I am here? So the Mostly rationale... what do people say? No. People have to see a training-like situation helps people think about. किसी ने सोचा ही नहीं होता. They are a part of the rut. तो इतनी हर रोज की भागा दौड़ी में उनको ये सोचने के लिए अवसर ही नहीं मिलता. जब इकट्ठा आते हैं, एक ही छत के तले विचार करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चर्चा करते हैं, तो द सर्च लाइट इज ऑटोमेटिकली टर्न्ड इनवर्ड. दे इंट्रोस्पेक्ट. So ideological motivational training is part 1. Once that is done, we move on to some kind of training which is called as functional training, wherein you get to know the rules, regulation, acts, legislations, the mannerisms, the processes, everything. And the third one is skill training, wherein you have to understand how to speak good, how to speak well, how to imbibe the skills of public speaking. And there are men and women who are Yeah. And women in good number. They are more interested. और इतने अच्छे अनुभव हैं हमारे महिलाओं के प्रशिक्षण के कि जिसके कारण महिलाओं को वो एक स्पेस मिल जाती है ना. पहली बार जब हमने केवल महिलाओं का एक प्रशिक्षण वर्ग किया था, आई थिंक 95-96 की बात होगी, तब सारे विभिन्न दलों की महिलाएं इकट्ठा आई थी. एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था और सारी महिलाओं ने, instead of we issuing a certificate to them which we normally do, they issued a certificate to the institution saying कि पहली बार हमारे पति और बाकी पुरुषों से अलग अपनी एक स्पेस को एंजॉय करते हुए हमने एक ट्रेनिंग का अनुभव किया. We are thankful to you. So, I'm going to come back to the issue we were talking about, projection of soft power. In this, what happens is that there are many times that our leaders go abroad. They talk about India, they project India. It could also be not just the leaders, it could even be an ICCR troop which is going. अब वो जब वहाँ जाते हैं, they represent India, they represent Indian culture. If they don't project it properly, it tells badly on India. Is there a training which is imparted to those who represent Indian culture when they travel abroad? Generally speaking, yes, it's not a very structured training because people who understand Bharatanatyam or who perform, let's say, Satriya dance or any other Indian dance variety, or even the classical music, or even for that matter our instrumental music, most of them are ingrained in our traditions, whether it is Guru Shishya Parampara or everything. And in our country, every art form is linked with our spirituality. हम जितनी भी कलाओं की साधना बोलते हैं ना उसको, तो वो तो एक तपश्चर्या ही होती है और उसमें भी कोई एक देवता होती है. जो भी आपको उचित लगे वो देवता हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं. अभी हमारे मीरठ जैसे शहर में ये तानपुरा बनाने वालों की बड़ा समुदाय है. मोस्ट ऑफ देम आर फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम. एक यूसुफ मुल्ला जी है, उन्हीं के तानपुरे भीमसेन जोशी जी यूज करते थे. तो उनके बेटे ने हमें अप्रोच करके कहा कि मोस्ट ऑफ आवर तानपुराज, इफ वी लाइक क्रिएट 100 तानपुराज एवरी ईयर, 70 of them are exported and they go to majorly in New Jersey, New York area or in UK.
Whereas I would think that, once the rags and the tals and things started coming in boxes and it was easier. तो वो तानपुरा एक तो if you're a classical singer, इधर उधर जाना, उसको hand carry करना पड़ता है, उसको डब्बे में डाल के आप check in करेंगे तो टूट जाता है, तो they would travel with the boxes. Not really. But it's really changed. Not really, because people understand. मशीन का अपना एक महत्व है जी. एक कॉम्प्रोमाइज के रूप में आप वो लगा लेते हैं, मगर तानपुरे की जो आवाज है, उसका जो नाद है, उसकी जो मधुरता है, उसकी जो नजाकत है, वो अलग है. So it's being exported to the US. And not only that, ICCR changed its policy and now we have decided to send the artisans also, because there are issues about the maintenance of tanpuras and rudravinas and several such string instruments. Sir, two things I want to talk about: yoga and cuisine. Cuisine की जब बात होती है, then the whole thing about turmeric, about patents, and then most people say कि हाँ ये balti chicken tikka curry, this is what is associated with India, but there is so much more to cuisine. Why do we not talk about cuisines which are lost, cuisines which represent India and not just one which the British made India famous for? And that whole talk, in fact, today somebody was saying that, with this Israel-Hamas war, people are so aggressive and so angry. So the Israelis are not going to Palestinian restaurants, Palestinians are not going to Israeli restaurants abroad. लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ चाहे जितना भी झगड़ा हुआ है, हम लोग जंग भी लड़े हैं, लेकिन इंडियंस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स में आते हैं. As far as cuisine is concerned, Indian cuisine is not a divisive force, is not a divisive force, it is unifying. Well, if I may also add very humbly that no part of Indian culture is divisive. We are always integrationist. और इसलिए cuisine में भी आज तो बात ऐसी है कि Indian restaurant has itself become a brand. And there are many people from neighboring countries who run an Indian restaurant, although they are not Indians. Correct. So, and the cooks, even in an Indian restaurant, may all be from Sylhet. Yeah, when it comes they to could be from anywhere in UK. but the brand is Indian. लोग, मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, मगर उस देश के नाम से आप रेस्टोरेंट चला के देखिए कितना चलेगा, और इंडियन रेस्टोरेंट नाम से चला के देखिए. So you were saying that why we are not recognizing the culinary and cuisine traditions. I would say we have started. Okay. And during the last couple of years we have decided, and now this year we have implemented it, which is we are recognizing such Indian restaurants which are serving Indian food, largely pan-Indian food, south and north both, if not east and west as well, and who are there for almost 5-6 years working with an unblemished kind of record. And they have made a mark insofar as attracting footfall of the locals, not just NRIs. We have decided to recognize them. We formed a selection panel with the involvement of several globally recognized chefs and others. And this year, the Annapurna certificate was announced on World Food Day on the 15th of October. What is that certificate? ये certificate जैसे किसी रेस्टोरेंट की गुणवत्ता का एक परिचायक है. गवर्नमेंट सर्टिफिकेट. हाँ, मतलब ICCR दे रहा है. ICCR, हाँ. तो इन 6-7 रेस्टोरेंट्स को हमने दिया है, जिनके शेफ्स और जिनके मालिक अभी दिसंबर में भारत में आएंगे, और उनका हम सम्मान पूर्वक अन्नपूर्णा की एक मूर्ति देकर सम्मान करेंगे. उनको पहले से एक प्लाक दिया गया है जो डिस्प्ले करेंगे कि दिस रेस्टोरेंट इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट ऑफ द ICCR. That is, it is authentic Indian food. Correct. Authentic Indian food, quality Indian food. Okay. And a recognition of their contribution to India's soft power in a way. हाँ, okay. क्योंकि उनकी भी तो पीठ थपथपानी चाहिए ना. और न केवल रेस्टोरेंट्स में, तो कहूँगा कि हमारे ढेर सारे मतलब जीवन के अंग जितने हैं उनमें हमारे लोग काम करें. आई वॉज देयर इन मॉस्को एंड द लोकल एम्बेसी पीपल टोल्ड मी दैट देयर आर एटलीस्ट half a dozen Indian tailors who have become famous over here doing a brisk business because Bandagada is becoming extremely popular. Oh, okay. तो इंडियन एपरल्स भी अपना ही एक विशेषता रखते हैं. I knew about Indian साड़ी fabric. के बारे में भी, इंडियन फैब्रिक के बारे में भी, साड़ी के इंडियन apparel I didn't डिजाइन, know. हाँ, मतलब तरह तरह के, जितना देखिए वही तो है ना, ये खूबसूरती है हमारी संस्कृति की जी. कि इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, विशेषताएं हैं. Handicrafts, of course. हाँ, बिल्कुल. हाँ. तो इनको हम जितने अच्छे तरीके से लोगों के सम्मुख ले जाएंगे, मार्केट करेंगे. आयुर्वेद वही हाल है.
अभी आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स विश्व के हर कोने में आपको दिखाई देते हैं. But there's a lot of mumbo jumbo which goes under the umbrella of Ayurveda, under the umbrella of yoga, which it is not patented. I It agree. is not. I agree. There is no. Our collective inertia to be blamed for that. But we have made a correction. From If I may- Bikram yoga to dog yoga to Yeah, hot yoga to beer yoga. Beer yoga. I mean, you might not have heard, but there are so many perversions of it. But if we have missed the bus in the context of yoga, at least in the context of our traditional dance, our dance traditions, we should not be doing that. Which is why we have now decided to have a panel. The panel is already working, and we are going to, as ICCR, accreditate the trainers and training institutions who are teaching Bharatanatyam, Kathak and Odishi to the students abroad. क्योंकि मैं अगर अमेरिका में रहता हूँ और मुझे इच्छा है कि भरतनाट्यम पढ़ना है, तो भरतनाट्यम ऑथेंटिक है या नहीं ये मुझे कैसे पता चले? तो एगमार्क जैसा कुछ होना चाहिए. तो हमने आईसीसीआर का एक्रेडिटेशन देना तय किया है. और ऐसे जो गुरु है, जो एक्रेडिटेड है, उनके माध्यम से आपको ऑथेंटिक भरतनाट्यम, क्योंकि भरतनाट्यम में भी मिलावटखोरी नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? इनोवेशन के नाम पे. हाँ, मतलब किसी भी नाम के मार्केट को सहेजना है, और इसलिए दिस इज ऑल्सो ए डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलिज्म, आई वुड से. Okay. And who will do this? You have There a is team a of experts. panel of Okay. experts in all these genres for that matter. Right. तो उनका हमने एक So, समूह आप तैयार इतना वाइडली ट्रैवल करते हैं, आपने तो देखा होगा जहाँ पे भी आप जाते हैं, वी आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ आर फिल्म इंडस्ट्री, जिसे बॉलीवुड कहा जाता है, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री हो, इवन इन प्लेस लाइक जापान, रजनीकांत इज एन आइकॉन. Right, you go to Afghanistan, Amitabh Bachchan or Shah Rukh Khan is an icon. You go anywhere in the world, but there is a section of the film industry which feels that they are looked down upon by the powers, by government of India. I'm not talking about the current government or the previous government. I'm saying that mostly even the academic culture is like they look down upon the film industry. ये populist है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब it doesn't get the respect that it ought to get, but it is a major soft power tool in the hands of our. Do you agree with that? Entirely. I cannot agree with you more. When I had the chance of visiting Uzbekistan, in Samarkand, in Bukhara, wherever we went, we were received with welcome by a band playing the tunes of Awara. So that Mohini, that impact continues, maybe decades after. तो ये तो है. तो भारत का म्यूजिक, भारत के फिल्में, अभी कजाकिस्तान में हम गए थे, वहाँ पर लोगों ने कहा कि वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी विथ इंडियन मूवीज, स्पेशली टीवी सीरियल्स लाइक सास भी कभी बहू थी एंड सो फोर्थ. बट दे सेड वी वांट देम इन कजाक सबटाइटल्स, नो मोर रशियन सबटाइटल्स. अभी ये जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस है, उसको हमें कैटर करना पड़ेगा. ये हम करेंगे तो निश्चित रूप में होगा. और जहाँ तक प्रतिष्ठा की बात है, मैं मानता हूँ कि अब ऐसा नहीं रहा कि हमारी फिल्म जगत को उस लिहाज से नहीं देखा जाता. जरूर देखा जाता है, और भी उसमें तरक्की होनी चाहिए, बिकॉज फिल्म मेकिंग इज नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ आर्ट एंड बेसिकली सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज, जिसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं, वो सारा उसमें दिखाई देता ही है ना. उसके लिए भी देखने की एक पद्धति होनी जरूरी. You know, the projection of Indian culture, it used to be in a haphazard and confused manner. But when we saw it at G20, it really opened our eyes that it can, and when we spoke to some of the delegates and those who had come, they were quite amazed at the enormity of it all. You know, कि हर जगह आप, हर शहर, हर गांव में जाके आप इंडिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो सॉफ्ट पावर हो गया even for the locals, for Indians also, not just for the delegates who had come. There was a sense of pride that हाँ हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, हमारा culture देख रहे हैं. That was one. The second was, I just saw an interview of Alia Bhatt, which ran on one of the channels, and she said that the question asked to her was, जब national award मिला, तो what was the first thing that you thought? So she says, when I came, it was all so well organized. And I was like, एक बार फिर से सुनूं क्या बोला है, क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ विज्ञान भवन में कोई इवेंट है,
disorganized way of doing it is what used to always be there. Pragati Maidan, jahan pe hota tha, it was disorganized, whether it is the trade fair or whatever. The concept was that anything India does, there is a madness to it. And then there was this cute term called method to madness. Like our roads. Ki haan, this is the Indian way of doing it, of confusion. And फिर last minute, like an Indian wedding, सब कुछ ठीक हो जाता है. But now there was this systematic way. There is a change in the way things are done in India. It gives me an immense sense of pride. Absolutely. I mean, the way things are now being presented, very neatly, systematically. See, we were traditionally also perhaps, while we were a knowledge society, but perhaps we lacked in the art of presentation. And today, the jamana is such that simply to be good is not enough. You have to appear to be good. And this perhaps we have learnt of late and very effectively learnt. The way we conducted during the G20 or the way we present our culture elsewhere in the global community, all over the world for that matter. Without being shy, without being apologetic, we are now taking pride, a legitimate pride I would say. We are not unnecessarily trying to be jingoist for that matter. मगर ये सारा हम कर रहे हैं. जैसे देखिए, स्वाधीनता के ज़माने में चाहे लोकमान्य तिलक हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, वीर सावरकर हो, इन सबों ने, इवन महात्मा गांधी, स्व पर बहुत बल दिया था. स्वदेशी, स्वभाषा, स्वभूषा, तीनों का महत्व था. It was not for no reason that Gandhi decided to have that loin cloth only. क्योंकि उनको लगता था कि ये मेरी भूषा है और मुझे उसमें कोई शर्म होने की, कोई महसूस करने का कोई कारण नहीं है. Similarly, the talk of education in mother tongue today, it links to स्वभाषा. लोकमान्य तिलक जी ने उस जमाने में कहा था कांग्रेस के अधिवेशन में कि लोग अपनी अपनी मातृभाषा में भी बात करें, कोई चिंता नहीं. The way we love our mother and our motherland, we have to love our mother tongue as well. ये बहुत जरूरी है. मैं रूस गया था तो वहाँ के एक हिंदी ट्रांसलेटर ने कहा मुझे, शी इज ए 70-year-old टीचर टीचिंग हिंदी इन मॉस्को यूनिवर्सिटी, that I must thank your Prime Minister because he comes here and speaks in Hindi, which is why people like us have now got some job. नहीं तो अंग्रेजी में ही बोलने वाले प्रधानमंत्री थे आपके, तो हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं था. बट नाउ हिंदी टू रशियन ऐसा अनुवाद करने वाले, ट्रांसलेट करने वाले लोगों को काम मिला. आप मातृभाषा की बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर यही एक्यूजेशन है कि इट इज़ हिंदी इम्पोजिशन. देयर आर 5 states in South India and all of them feel across the board that your party tries to bring about imposition of Hindi. वहाँ जाके आप हिंदी में बात करते हैं and हिंदी को encourage करते हैं. It is language politics played by them, I am sorry to say. I can vouch for this, that the amount of Tamil quotations that have been used by Prime Minister Narendra Modi, there was perhaps no previous Prime Minister who would have quoted the great celebrated Tamil poet Thiruvalluvar the way Prime Minister Modi has done. Subramanyam Bharati, किसने उनकी जन्म शताब्दी को मनाया? तो मैं मानता हूं कि ये, हम तो, मलयालम भी हमारे लिए उतनी ही पवित्र और सम्मानीय भाषा है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, तमिल है, सारी भाषा, मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए. Does that make us, if we give so much emphasis on the mother tongue and learning in the mother tongue, will that make us non-competitive in the world? Because so far, like our software professionals and all, when they went, we had an edge over many others because of our English language medium of instruction in schools. Will that make us less? Not at all. I think, see, it's a process of evolution. जब तक हम, देखो, फ्रांस में जाएंगे तो आपको फ्रेंच में मेडिसिन सीखना पड़ता है. अभी कई भारतीय बच्चे चाइना जाते हैं, रशिया जाते हैं और वहाँ पर मेडिसिन पढ़ते हैं, तो वो तो पहले रशियन पढ़ना ही पड़ता है उनको. तो अगर हम हमारी भाषाओं में, मराठी में, गुजराती में, उड़िया में, असमीज में अगर मेडिसिन पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो क्या आपत्ति है? सी, आवर एम्फोसिस ऑन मातृभाषा is not something which is anti-English. It should not be construed that way. You have to master English as well. उसमें कोई दो राय नहीं. What languages do you speak and how many? How many? Your mother tongue is Marathi. My mother tongue is Marathi. Thanks to my stint in ABVP, I could in a way have some command over Hindi.
and I love Hindi very well. And I have been a postgraduate student of English literature, so English is also something. Why did you study English literature? What was the connection? Being ABVP, English No, ऐसा literature, कुछ नहीं. आप शेक्सपियर क्यों पढ़ेंगे? I had the passion of going into media. तो ऐसा लगा कि इंग्लिश मीडिया में थोड़ा ज़्यादा वेतन वगैरह मिलता है तो वहाँ जाना चाहिए. Okay, I'm sure by now that mistake has been corrected, that which you had in your mind. I know. But so when you joined the BJP, did you aspire? What did you aspire for, and what inspired you to join the BJP? Well, I mean, in our ideological movement, in a way, things come to you very naturally. I was a Sangha Swayamsevak, then ABVP Karyakarta. I had the occasion of fighting against emergency and then waging satyagraha, participating and being behind bars for just 45 days in Yerawada in Pune. तो इस अडवाणी जी भी वहीं थे ना? नहीं, अडवाणी जी बेंगलुरु में. बेंगलुरु में, अच्छा, हाँ. मगर पुणे में महाराष्ट्र के काफी नेता थे. हमारे सरसंघ चालक देवरस जी भी वहीं थे. तो वो तो ठीक है, वो तो एक समय का तकाजा होता है. तो उसी क्रम में फिर एबीवीपी में हम आए और काम किया. आई वाज द नेशनल सेक्रेटरी ऑफ एबीवीपी इन द 80s and then I had a brief stint in media in the corporate sector as well. And then since 1988 I am with Mahagi Prabodhini. Till 2016 I was the principal functionary as founder director and later on director general, as what they say. And now I am the vice chairman of Rambau Mahagi Prabodhini. And what do you feel like when you train young leaders of the country? What is that? What promotes you, or what is the inspiration to bring out these young leaders? What do you want to do? If I only talk about the current generation, which we normally refer to as Gen Z, तो एक तो ऐसा है कि in the young generation, now there is a deeper understanding of the fact that you cannot go just like that in politics. If you go with some training, then you can make a big impact. That realization is there, which was not there earlier. I'm sure you must have come across a poem which Advani ji used to say. He used to quote him. शैल चतुर्वेदी जी की एक कविता है और वो उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना अधिवेशन हुआ, कार सरकार वाला. हाँ, बताइए, पर फिर भी बताइए. हाँ. नए नए मंत्री बने एक सज्जन जब पहली बार सरकारी कार में बैठे, तब उन्होंने ड्राइवर को कहा कि आज गाड़ी मैं चलाऊंगा. तो ड्राइवर बेचारा डर का मारा बोला, मैं हुजूर मैं तो उतर जाऊंगा. मंत्री जी ने पूछा, भला क्यों? तो ड्राइवर ने कहा, क्योंकि महोदय ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल सकती है. तो सरकार Advani ji would say this and then smile. Yeah. समझे कि नहीं? He had a unique style, or has a unique style of narrating. And he was so lovable. Yeah. Even a small कार्यकर्ता like me, he always used to inquire, कैसे हो विनय? मतलब these are the things which touch your heart. Both he and his wife, Kamla ji. course. I have once, I remember I was sitting there and suddenly Advani ji walked in, and you know the way he would tell Kamla, 15 लोग हैं आज भोजन पे. And I was like, 7 बज चुके हैं, 15 लोग भोजन पे आप कहाँ से ले? So she said, घबराना नहीं है, अपने आप हो जाता है यहाँ पे. She was accustomed to all these things. Yeah, because that is, I guess, the culture of the RSS also, कि जो भी आया, जो भी घर में बना, वो आप मिलजुल के खाइए. मतलब खिचड़ी, of course, he always ate सात्विक भोजन. वो ज़्यादा नहीं खाते थे, वो थोड़ा ही खाते हैं. अभी भी he is very small eater, you know, he doesn't eat much. But yes, like so coming back to Gen Z, I would say that they are curious about their own capacity building. They have realized the importance of it and they come in good number. These days, policy research has become a craze.
Everybody wants to study public policy as what they call. God knows where exactly are these people going to land themselves. Think tanks. Yeah, I don't know, but we don't have so many think tanks. Ji. And whether these think tanks are really contributing is also a matter to be investigated. So, but there is a lot of, I'm seeing a lot of young professionals who studied this, who in corporate sector, it is encouraged because people now want people, workers who are more, what should I say, sensitive to understanding that it's not just numbers which matter. It's what you contribute to society also. So, you were saying, sir. That is true. But then I would also say that some kind of gravitas and some profoundness to their learning is something which is in short supply. Do you feel that social media is a deterrent, or is something that young leaders of tomorrow should embrace? No, they have to embrace, because that is the way to communicate. See, as I said, to be good is not enough. You have to appear to be good, which means that you have to appear, first of all. And where would you appear? The platforms are there for you to appear. And how to appear effectively, that depends upon the skills that you have acquired. So, certainly social media you just cannot ignore. But social media is a tool for you to use, not you are to be used by the social media. Okay. तो इसका थोड़ा आकलन बनना बहुत जरूरी है. और ये डेंजर्स हैं आज की सोसाइटी में. निश्चित रूप में है. सोशल मीडिया की धारा में हमने प्रवाह पतित होकर बह जाने की जरूरत नहीं है. उस पर इस तरीके से कमांड हमने प्राप्त करनी चाहिए कि वो हम जो चाहे उस पद्धति से उसके अंदर एक नैरेटिव बनाने की क्षमता निर्माण होगी. अगर मैं 2024 की बात करूं, what are your prospects? What do you imagine is going to happen with the BJP? How many seats? Is it going to be a clean sweep? What are the challenges before the BJP for 2024? Well, BJP has made it very clear that we take every election as a challenge. हम बहुत सीरियसली चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव को हम चुनौती मानते ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है. तो चुनौती तो है, चुनौती हो भी सकती है, मतलब तरह तरह की चुनौतियां समय समय पर आती है, क्षेत्र क्षेत्र में आती हैं. बट एक अगर मैं फ़र्क जो मुझे प्रतीत हो रहा है, मैं फील कर रहा हूँ, उसको अगर बताऊँ तो 2014 was all about rejection of Congress. 2019 was about continuation of BJP government because it was working well, rising to the expectations, and people were all in support of Prime Minister Modi. Today people have realized that for their own interest, they have to have BJP back into the power. Because those who were school-going kids in 2013, 2014, today are grown-ups. They have seen how the government has added value and made their lives rather easier than what they were, what were the lives of their parents for that matter. इसके कारण इस सरकार ने जो वैल्यू एडिशन किया है, इसका अनुभव ली हुई पीढ़ी अब वोटिंग करेगी. तो इस पीढ़ी को तो मतलब दे डोंट रिक्वायर टू बी कन्विंस्ड, and therefore for their own sake, see, this is the aspirational generation, and to shape their aspirations and to take them to a different level, they require a strong government, a decisive government, and they know that only Prime Minister Modi can give this kind of a government. And yet there are many people in India who feel that the 10 years of the Modi government has probably fragmented and polarized the country to a large extent. Would you speak to that, or would you ignore that section of Indians? No, see, polarization is only because of a certain amount of ideological untouchability and a personal anathema towards Prime Minister Modi, that they have imagined that it is there. ऐसा नहीं है. आइडियोलॉजिकल अनटचेबिलिटी के तो हम बरसों से शिकार होते रहे. अब हम सत्ता में आए तो उन्होंने अपने स्वर अधिक बुलंद किए और तरह तरह की गालियाँ, अभद्रता और आरोप हमारे ऊपर चिपकाने की कोशिशें की गई. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को अब पता है कि वो क्या है और हम क्या है. और इसलिए मुझे लगता है कि द वर्डिक्ट इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर. पीपल वांट दिस गवर्नमेंट टू कंटिन्यू
and therefore Prime Minister Modi will certainly roam home. Another question I want to ask is, the whispers in the corridors these days is that अगर 2024 में मोदी जी फिर से आते हैं, उसका मतलब है 5 साल और बीजेपी, मतलब 15 साल बीजेपी की सरकार. After 10 years, there are going to be monumental changes in everything, in every sphere of life. क्योंकि first 5 years, Modi ji was finding his way probably in Delhi and did not cause many changes. The next 5 years saw phenomenal changes also. If I was to list it, there are many changes which have happened. And the political fabric of the country also changed in the next, and there's consolidation which happened. The 15th part of the thing, which is like 10 to 15 years, means legacy building, which means a lot of changes. And the way India was will change. Do you hear that, those murmurs also? Well, change is all around. I mean, the way we were preparing for elections in 2013, 2014, early 2014, and then in 19 again, and then again in 23, 24, of course there is a change. इसमें कोई दो राय नहीं. तो मतलब उस समय तो PPTs का बड़ा बोलबाला था ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बॉयज कहते थे. अब तो रील बॉयज हो गए सारे. अब तो उतना भी समय नहीं है किसी के पास. अब तो रील इज बिकमिंग अ टूल टू शेप द नैरेटिव वेदर यू लाइक इट और नॉट. दैट इज द फैक्ट. तो समय और somebody called this that we are living in an attention economy. No, sir, what I meant was that in the second tenure of Modi ji, जैसे कर्तव्य पथ बना दिया, पार्लियामेंट बिल्डिंग अलग बना दिया, मंदिर बनने वाला है, Varanasi has changed. There are so many changes. If I was to go from north to south, from Kashmir onwards, things have changed. And similarly, if he wins 2024, there will be police reforms, administrative reforms, educational reforms, and reforms where the way we knew things is going to completely change. If you speak to Kashmiris, the way Kashmir was before the abrogation and then after, it's a different Kashmir altogether, right? Similarly, even in Varanasi, you will see, similarly in many parts of the country, in the northeast, which we have seen. Now, do you see that there is an ambition, there is a goal? Is there something that your party is working for a transformational change in India? Yeah, of course, as what Prime Minister has very rightly, in a way, summarized in his Pancha Prana, that believe that you are a developed country, don't be in the manasikta of a developing country. तो एक thinking big का एक संस्कार है, एक दृष्टि से मैं मानता हूँ कि उनके द्वारा जो दिया गया है. Not be embarrassed or shy to think big. That is what I'm saying. At the same time, he has been saying that do away with all the shreds of colonial hangover that we may have. पूरे तरीके से मुक्त हो जाइए जो उपनिवेश की मानसिकता थी उससे. ये सारी चीजें हैं, बाकी बहुत सारी बातें हैं उसमें. तो ये जो उन्होंने एक दिशा हमें दिखाई है, मैं मानता हूँ वो पूरा देश उस दिशा को पकड़कर आगे बढ़ने की स्थिति में निश्चित रूप में है और उसके कई आसार हमें दिखाई देते हैं. तो वो ब्लूप्रिंट सिर्फ पार्टी के लिए नहीं है, it's for the country. Not at all. It's for the entire country, which is why he chose the occasion of Independence Day address while sharing his Pancha Prana. And he is on the one hand very philosophical, on the other hand he is very practical as well. कई विषयों में मतलब मैं उनके भाषणों को अगर थोड़ा तराशता हूँ तो दिखता है कि इतनी प्रैक्टिकल बातें उन्होंने बताई है. जैसे उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि उन घर के माता पिताओं ने अपने बेटी के साथ बेटे को भी पूछना चाहिए कि इतनी देर रात कर क्या रहा था. सो देयर हैज टू बी अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मेल चिल्ड्रन एज वेल, विच इज अ सटल मैसेज टुवर्ड्स जेंडर जस्टिस, इज इट नॉट? यस. तो ये जो बातें हैं मैं मानता हूं कि ये एक नई जमाने की नई सोच है, विच इज व्हाई ही कॉल्स इट अ न्यू इंडिया. Right. And the new India is there on the horizon, and 2024 will further expedite the process of. And in this new India, what role do you see for yourself? Well, I am a karyakarta, so whatever the higher ups decide, we will play that role. Right. All the best, sir. Thank you so much for being part of the podcast. Dhanyawad. Thank you so much.
Thank you for watching or listening to this edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes. नव दिवस नवारंभ। आप सभी दर्शकों के लिए यह वर्ष अत्यंत मंगलमय, उन्नति और स्वास्थ्य से भरा हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। इसरो के इस वर्ष के प्रथम प्रमोशन मिशन, जिसका नाम है PSLV C58 एक्सपोसेट मिशन। नववर्ष के साथ इसरो भी अपने नवीन अंतरिक्ष प्रयोगों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए फिर से सुसज्ज है। अपने उद्देश्यों को पूरा कर अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की एक छाप छोड़ने के लिए इसरो पूरी तरह तैयार है। पिछले वर्ष हमने 7 सफल प्रमोशन देखे। इनमें गगनयान 3 का प्रमोशन, चंद्रमा की सतह पर अवतरण और आदित्य L1 उल्लेखनीय हैं। इसमें महत्वपूर्ण गगनयान संबंधी प्रयोगात्मक प्रमोशन भी किए गए थे। बीते वर्ष की सफलताओं से और ऊर्जावान होकर इसरो इस वर्ष तैयार है अपने प्रथम प्रमोशन मिशन के लिए, जो कि भारत का पहला एक्सरे ध्रुवणमापी मिशन होगा। आज 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 द्वारा एक्सपोसेट उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 9:10 पर प्रमोशित किया जाएगा। Namaste viewers and a hearty welcome to the live telecast of the maiden launch of ISRO in the year 2024. I am Madhuri giving the commentary in English, and with me in the commentary box is Mr. Vikas Swarnakar giving the commentary in Hindi. I wish you all a very happy and prosperous new year. The launch of PSLV C58 ExpoSat mission will take place today, the 1st of January 2024 at 9:10 Indian Standard Time from the first launch pad at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, the spaceport of India. The telecast is brought to you live from the Mission Control Center, courtesy Doordarshan. Apart from this, you can also watch it on ISRO website, YouTube
Facebook, and X. The PSLV C58 will fly eastward and intends to place X-ray polarimetric satellite XPOSat weighing 469 kilograms in an elliptical orbit with an apogee of 7,028.3 kilometers and 6 degrees inclination. XPOSat will carry out studies related to X-rays emanating from cosmic sources. After injection of XPOSat in its intended orbit, the PS4 stage will burn twice to change its orbit for placing the PSLV Orbital Experimental Module POEM at 350 kilometers altitude for its 10 payloads to carry out experiments. इस मिशन के उपग्रह एक्सपोसैट, जिसे हम जानते हैं एक्सपोसैट, एक एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह है। यह चरम स्थितियों पर उज्जवल खगोलीय एक्सरे स्रोतों को विभिन्न गतिशीलता के अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित ध्रुवणमापी मिशन है। अब आप सभी दर्शकों के सामने एक कर्टेन रेजर वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी अभी आपने इस मिशन से संबंधित कर्टेन रेजर वीडियो देखा। इस मिशन में PSLV C58 प्रमोचक यान द्वारा वैज्ञानिक निर्धार को पृथ्वी की निचली कक्षा में 650 किलोमीटर की ऊंचाई वाले चक्राकार कक्षा में 6 डिग्री के झुकाव के साथ प्रक्षेपित किया जाएगा। एक्सपोसैट उपग्रह को लगभग 1316 सेकेंड्स में उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। इस मिशन में चतुर्थ चरण को कक्षीय प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसे हम PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के नाम से जानते हैं, पोयम। प्रमोचन की उल्टी गिनती 25 घंटे पहले प्रारंभ हो चुकी है और अभी हम प्रमोचन से 21 मिनट 30 सेकंड की दूरी पर हैं। इस दौरान यान को और तथा स्पेसक्राफ्ट को पावर ऑन कर स्वास्थ्य जांच जारी है। सभी तंत्रों के स्वास्थ्य जांच जैसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, नियंत्रण तंत्र, पायरो सिस्टम, टेलीमेट्री और कमांड, ट्रांसपॉन्डर तंत्र, तरल नोदक के भराव को सुनिश्चित किया गया है तथा अंतिम आवेशन जारी है। कुछ ही समय में स्वचालित प्रमोचन अनुक्रम यानी ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस की शुरुआत की जाएगी। We are close to 20 minutes from the launch. The year 2023 has been a very eventful one for ISRO. Prestigious Chandrayaan-3 has landed safely and softly at the lunar South Pole. The historic point of landing has been named Shiv Shakti Point, and the momentous day of 23rd August has been proclaimed as National Space Day. Aditya L1, India's first space-based solar observatory, was successfully launched, which is in the last leg of its journey to reach its special vantage point within the next few days. Ahead of the ambitious Gaganyaan mission, an abort condition was simulated and crew emergency escape strategy was successfully tested through TVD-1 mission. In all, there were 8 launches. T-20 minutes. Present launch will be the 95th All launch stations, from change SDSC over to Shar channel 2. and 60th for the workhorse PSLV. 4th time that it is flying in its real configuration. Event 456 completed. Roger. POT to ROD, all radar tracking systems are ready. PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन में 3 मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें भारत का पहला एक्सरे पोलैरिमीटर आधारित वेधशाला खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि PSLV सबसे विश्वसनीय और बहुमुखी रॉकेट है, इसलिए इसके चतुर्थ चरण का प्रयोग अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए पहले भी किया जाता रहा है और इस बार भी PSLV C58 के 10 ऑर्बिटल पेलोड्स के निर्धार लिए अपने प्रयोग करने के लिए सफर कर रहे हैं। इसमें फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा तंत्र भी सम्मिलित है। एक्सपोसैट के प्रक्षेपण के बाद पोएम 3
की प्रक्रिया पहले PS4 जो कि चतुर्थ चरण है, इसमें से बचे हुए प्रणोदक को निकाल दिया जाएगा और इसे हम स्टेज पैसिवेशन भी कहते हैं। The countdown for PSLV C58 ExpoSat mission has commenced 25 hours ago, that is at 8 hours 10 minutes in the morning yesterday. The ISRO personnel have been involved in the round-the-clock operations in getting the rocket ready for the launch. The liquid propellants have been serviced and the gas bottles that carry gases for stage commands and pressurization have been charged and pressurized to pre-flight values. Onboard batteries have been charged. The tracking radars and other systems have been verifying their preparedness for the launch event. The satellite and rocket subsystems have been run to ascertain their health through checkup. T-18 minutes. We are 18 minutes away from the launch. Countdown is progressing. Parameters of PSLV C58 launch vehicle are normal and within specifications. The launch vehicle is ready for PSLV C58. Control to node 463 to 467 completed. Mission Director, Roger. जैसा कि हम जानते हैं, PSLV इसरो के एक बहुमुखी रॉकेट है। इसके कुल 5 संस्करण हैं, जिसमें से इस बार यह अपने DL संस्करण का उपयोग में किया जा रहा है। यह संस्करण उपग्रह के भार और मिशन की जरूरतों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। 473, 479 completed. विन्यास में प्रथम चरण में कोर बूस्टर के साथ 12 टन के 2 ठोस नोदक वाले स्टेप-ऑन बूस्टर संलग्न रहते हैं। दूसरे चरण में UDMH और N2O4 पर आधारित तरल नोदक वाला चरण होता है। टाइमिंग कंफर्म्ड, एक्सटर्नल होल्ड मोड। VLCC Roger. Satellite director to mission director. Satellite health is normal and satellite is cleared for PSLV C58 exposure mission liftoff. Mission director Roger. Forwarded to mission director. Range is ready for PSLV C58 ExpoSat launch. Mission director Roger. TTC director to mission director. TTC director confirms readiness of his track TTC network for supporting PSLV C58 ExpoSat mission. Mission director Roger. TCTC data loggers are on at Sharvan and SHA-2 stations. Noted. अभी आपने देखा स्पेसक्राफ्ट डायरेक्टर, रेंज डायरेक्टर। Mission director, mission readiness review and launch authorization board has already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C58 ExpoSat mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and ISTRAC network station and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C58 ExpoSat mission at 9:10 hours IST today, that is 1st of January 2024. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of PSLV C58 ExpoSat mission. SDS servers activated. Based on the authorization from Mission Director, Vehicle Director hereby authorizes to initiate the automatic launch sequence for the launch of PSLV C58 ExpoSat mission at 9:10 hours IST today, that is 1st January 2024. Automatic launch sequence initiated for PSLV C58 launch. ALC in auto mode. अभी आपने देखा उपग्रह निदेशक, रेंज निदेशक, टेलीमेट्री एंड कमांड निदेशक, यान निदेशक सभी ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दी थी। उसके पश्चात मिशन निदेशक संतुष्ट होने पर अपना अनुमोदन प्रदान कर चुके हैं और इसके पश्चात यान निदेशक ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिए हैं। We are closer to the launch and the automatic launch sequence has been initiated. Based on the readiness of all contributing and participating systems like the launch vehicle, satellite, range, downrange tracking stations, the mission director Dr. M. Jaikumar authorizes the launch. The vehicle director then initiates the automatic launch sequence 14 minutes before T0, which is a capsule of very essential checks to verify the systems of launch vehicle. 14 minutes.
very close to the scheduled launch time, control is passed on to the onboard computers. यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए हमारे शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बायक स्थित रडार स्टेशंस इस यान पर निरंतर अपनी नजर बनाए रखेंगे। मुख्य उपग्रह के प्रमोशन के पश्चात कक्षा की ऊंचाई 650 किलोमीटर से घटाकर 350 किलोमीटर तक लाई जाएगी। ऐसा चतुर्थ चरण को पुनः प्रज्वलित कर किया जाएगा। हम इसे सेकंड ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। इस दौरान त्रिवेंद्रम तथा शार स्थित रडार स्टेशंस भली भांति हमारे यान को ट्रैक करेंगे। PSLV C58 पूर्णतः सज्ज है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। यहाँ विजिटर्स गैलरी श्रीहरिकोटा में भारी संख्या में दर्शक उपलब्ध हैं। यहाँ The PSLV C58 rocket standing majestically at the first launch pad. On your screens, Secretary DOS and Chairman. PS4 activation completed. अब आप सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत है एक संक्षिप्त PSLV C58 का इंटीग्रेशन वीडियो। T-12 minutes. Now we bring to you an integration video of how the rocket has been assembled at the Satish Dhawan Space Center. You can see on your screens the beginning of the launch campaign with the flagging off of the nozzle end segment for the core motor. In the PSLV integration facilities, the stage 1 motor is being assembled segment by segment. The S139 motor consists of 5 segments, a nozzle end segment, 3 middle segments, and 1 head end segment. Two middle segments had been assembled, and this is the head end segment, and here's the igniter. C58 being a DL version has 2 strap-on motors, which are PSOM XL motors carrying 12.2 tons of solid propellant each. This is being brought to the PSLV integration facilities where it is tilted and integrated with the core motor. These are the 2 strap-ons. The SITVC tanks being integrated now. SITVC stands for Secondary Injection Thrust Vector Control for the control of stage 1, and this is RCT, Reaction Control Thruster Related Systems. Here you can see the interstage being carefully hoisted with the help of facility electrically operated overhead crane and being integrated to the core motor. And the second stage, PS2, which is a liquid stage, is prepared in a separate assembly building, being tilted. Vikas engine powers second stage of PSLV. It is being integrated with the core motor, and 2 stages are ready. Here, the PSLV is being transported in its semi-integrated condition from the PSLV launch integration facilities to the mobile service tower. T-9 minutes.
आपने देखा प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण का समायोजन पूर्ण कर यह तृतीय चरण को तथा चतुर्थ चरण को एक साथ समायोजित किया जा रहा है। इस समायोजन को MST मोबाइल सर्विस टावर पर लाया जाता है। सभी कार्य पूर्ण कुशलता तथा दक्षता के साथ संपन्न किए जाते हैं। यह है हमारा PSLV C58 का उपग्रह एक्सपो सेट। इसमें दो मुख्य निदभार हैं जिसका नाम है एक्सस्पेक्ट और पोलिक्स। पूर्ण परीक्षित कर एक्सपो सेट को भी पेलोड एडेप्टर के साथ चतुर्थ चरण के ऊपर में समायोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही पोयम के लिए 10 नितभारों को चतुर्थ चरण के साथ समायोजित कर दिया गया। इस समायोजन को मोबाइल सर्विस टावर पर लाकर PSLV रॉकेट के साथ समायोजित किया जा रहा है। यह ऊष्मा कवच हीट शील्ड और इस तरह तैयार है PSLV C58 रॉकेट। यहां से परीक्षण शुरू होते हैं और परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात प्रमोशन की स्थितियां प्राप्त की जाती हैं और प्रमोशन किया जाता है। वर्तमान में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है और अब हम उड़ान से 7 मिनट की दूरी पर। Studying of celestial objects unveils several mysteries. 7 minutes. In September 2015, ISRO had launched first dedicated Indian astronomy mission called AstroSat, aimed at studying celestial sources in X-ray, optical and ultraviolet spectral bands simultaneously. One of its objectives was to detect new briefly bright X-ray sources in the sky. While the AstroSat is still healthy and its payloads are continuing to provide valuable scientific data, XPOSat is a step ahead in the study. It is expected to unravel some extreme phenomena. The astronomy community is particularly enthused about the prospect of systematic exploration into the polarization of X-rays emitted from astronomical sources. This aspect of study is the latest emergence in observational astronomy. Earlier tools included imaging, studying the fluctuations of light from source, and spectroscopy, which is basically a study of spectrum of electromagnetic radiation emanating from celestial bodies. Earlier observations could reveal chemical composition, temperature, distance, velocity, and luminosity. Analyzing X-ray polarization signature enables measurement of deeper insights through manifestation of processes generating these X-rays having distinct signatures within appropriate energy bands, depending on the involved energetics. The XPOSat mission by ISRO is specifically designed to investigate such X-ray polarization signatures emanating from bright X-ray sources. The primary payload, polarimeter instrument in the X-rays or POLIX, operates to measure polarimetry parameters in the medium X-ray energy range of 8 to 30 kiloelectron volts photon. T-5 minutes. The first payload for this energy band. Its collimator plays a crucial role to ensure that only one bright source is within the field of view for most observations. The second payload, XPECT, X-ray spectroscopy and timing instrument, is designed to offer fast timing and excellent spectrometric resolution in soft X-rays, that is 0.8 to 15 kiloelectron volts energy band. अब हम उड़ान से 4 मिनट 22 सेकंड की दूरी पर। आइए अब आपको इस उड़ान के घटनाक्रम से संक्षिप्त में परिचय देते हैं। सर्वप्रथम रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स T-3 सेकंड्स पर प्रज्वलित किए जाएंगे। उसके बाद T0 पर
कोर बूस्टर प्रज्वलित होगा और इसके 400 मिलीसेकंड के पश्चात सॉलिड स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को प्रज्वलित किए जाएंगे। इस समय यान का उत्थापन होगा। लगभग 23 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर स्ट्रैप-ऑन के कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे और इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। कोर बूस्टर S139 बूस्टर प्रज्वलित रहकर कुछ 110 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर यान को 57 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा तथा 1.62 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति। प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात द्वितीय चरण को प्रज्वलित किया जाएगा और प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण 152 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा और इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत चला जाएगा और इसी दौरान ऊष्मा कवच को भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। PS2 द्वितीय चरण के कार्यकाल के पश्चात इसे पृथक कर दिया जाएगा और इसके पृथकन के 1 सेकंड के पश्चात ही तृतीय चरण जो कि उच्च निष्पादन वाला HPS3 चरण है, ठोस नोदक पर आधारित चरण, इसका प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। तृतीय चरण का प्रज्वलन काल 123 सेकंड का होगा और इस समय यान 206.8 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.23 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुका होगा। तृतीय चरण के कार्यकाल के पश्चात तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्ट फेज की शुरुआत करेंगे। इस दौरान कोई भी प्रज्वलन नहीं हो रहा होगा और यह कोस्ट फेज करीब 200 सेकंड्स तक जारी रहेगा। इसके पश्चात तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा, लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन से 425 सेकंड तक यह कोस्टिंग फेज जारी रहेगा। T-2 minutes। कोस्टिंग फेज समाप्त होते ही चतुर्थ चरण का प्रज्वलन होगा और यह वह अंतिम चरण है जो एक्सपो सेट उपग्रह को निर्धारित कक्षा पर लेकर जाएगा और उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित करेगा। We are very close to the launch and let me quickly run you through the flight events. About the nominal flight timelines for the PSLV C58 ExpoSat mission. At T0, which is scheduled at 9 hours 10 minutes, the first stage PS1 ignites and followed by the ignition of the two strap-on motors 400 milliseconds later. The strap-ons continue to burn for 70 seconds, after which they are separated from the ongoing launch vehicle. The PS1 stage, that is the core S139, separates 109 seconds into the flight. By this time, the launch vehicle would have gained an altitude of 57 kilometers and acquired a relative velocity of 1.6 kilometers per second. All sub-sum. The stage 2 ignites All sequences after PS1, continues to burn for 152 seconds. Operational time for PS3 is 124 seconds. PS4 will operate for 247 seconds. Then the injection parameters will be achieved. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. VSPP opened. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. प्रमोशन से 15 सेकंड की दूरी पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds.
इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharp's tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रेपॉन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Presently, the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as the relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। There is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है। इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है। Second stage performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है। By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal. Plus 4 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ Shah tracking station continues to track. Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई वर्तमान में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण HPS3 हाई परफॉर्मेंस थर्ड स्टेज कुल 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है। Shar and Port Blair tracking stations are currently tracking the vehicle trajectory. Third stage performance normal. During the operation of PS3, the rocket gains an altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases from 4.5 kilometers per second to 7.2 kilometers per second.
तृतीय चरण में कुल 7 होता है और इसका कार्यकाल 123 सेकंड का होगा। इसके कार्यकाल के पश्चात PS3 का कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा। सभी दर्शकगण यहाँ उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए। अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण। Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात ही Combined hosting for approximately 200 seconds. इसके साथ ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्टिंग फेज जारी है। There is a confirmation of expected performance by the PS3 stage, and currently the thrust has been cut off, but the vehicle is coasting with the PS3 still intact. The separation of PS3 has not yet taken place. Vehicle performance normal. यह कोस्टिंग फेज 200 सेकंड्स तक जारी रहेगा। उसके पश्चात तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। The combined coasting continues for 200 seconds. Thereafter, the separation of PS3 takes place, but PS4 continues to coast for another 400 seconds. During the coasting phase of flight, the relative velocity reduces from 7.2 kilometers per second to 6.7 kilometers per second, and as a result, close to 400 kilometers increase will be observed in the altitude. एक्सपोसेट विभिन्न खगोलीय विकिरण उत्सर्जन स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय आकाशगंगा, नाभिक, पल्सर पवन, निहारिका आदि से उत्सर्जित उत्पन्न जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है और इसे समझना खगोलविदों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। एक्सरे पोलैरिमीटर हमारी समझ में 2 और आयाम जोड़ेंगे। यह है ध्रुवीकरण की मात्रा तथा ध्रुवीकरण का कोण, और इस तरह यह खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन प्रक्रियाओं को समझने में उत्कृष्ट निदान उपकरण साबित होंगे। एक्सपोसेट द्वारा भारतीय विज्ञान समुदाय की राह पर यह एक प्रमुख अनुसंधान की दिशा है। एक्सपोसेट में 2 मुख्य वैज्ञानिक निदभार हैं जिनका नाम है पॉलिक्स और एक्सस्पेक्ट। इस उपग्रह का कुल भार 469 केजी है। इस मिशन में लगभग 145 केजी के वैज्ञानिक निदभार अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए सफर कर रहे हैं। इन्हें अंतरिक्ष प्रयोग पोयम 3 का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम पोयम PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का सफल प्रयोग 30 जून 2022 को PSLV C53 द्वारा देखा गया था। फिर 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 द्वारा पोयम 2 का प्रयोग भी हमने देखा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोयम 3 के प्रयोग किए जाएंगे। जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है। Separated hosting for approximately 425 seconds plus 10 minutes. तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में अभी समय है और इस दौरान PS4 का कोस्टिंग फेज जारी है। यह करीब 400 सेकंड तक जारी रहेगा। The PS4 is currently not operational, though it is in the coasting phase, which will continue for 425 seconds in all. Vehicle performance normal. The PS4 stage, when it ignites, will continue to burn for 247.5 seconds. Thereafter, the injection parameters of the
spacecraft XPOSat will be achieved. After injection of the primary satellite, PS4 has yet another milestone to accomplish. It lowers to an orbit of 350 kilometers. After XPOSat injection, this orbit will be at 9.6 degrees inclination, which is achieved through 2 restarts. These maneuvers are expected to take 83 minutes from the XPOSat injection. Once in the new orbit, PS4 will be subjected to passivation by venting remnant propellants and depressurizing the stage tanks. Thereafter, the control of stage is transferred to POEM avionics. Vehicle performance normal. There are 10 payloads in POEM, 7 of which are finalized through in space. Speaking about the payloads that POEM carries, Radiation Shielding Experiments Module, RSEM, is designed by a firm called Take Me to Space for evaluation of effectiveness of tantalum coating. The second payload, Women Engineered Satellite or VSAT for solar irradiance and UV index from LBS Institute of Technology for Women. Third payload is an amateur radio satellite, Belief Sat-O from KJ Somaya Institute of Technology. Fourth payload is again a CubeSat called Green Impulse Transmitter from Inspacity Space Labs Private Limited. LEAP TD from Dhruva Space Private Limited to demonstrate subsystems for microsatellite. 2 payloads are there from Peletrix Aerospace Private Limited, which are named Rudra 0.3 HPGP and Arca 200. 3 more payloads are from ISRO. The one from Physical Research Laboratory is called the Dust Experiment. 2 more from Vikram Sarabhai Space Center. One will be called as Fuel Cell Power System and the other is Silicon-based High Energy Cells. These are the payloads from ISRO. जहां भारत में सभी नववर्ष के स्वागत के लिए जश्न और मनोरंजन में लगे हुए थे, वहीं इसरो के वैज्ञानिक PSLV C58 प्रमोशन की तैयारियों में जुटे हुए थे। इनकी गतिविधियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए थे। सफल मिशन के ध्येय से सराबोर इसरो के वैज्ञानिक इस वर्ष का आरंभ खगोलीय समझ को और बढ़ाने के उद्देश्य से PSLV C58 के प्रमोशन में कार्यरत हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 516 किलोमीटर, एक्सपोसैट की अंतक्षेपण की कक्षा 650 किलोमीटर के करीब होगी। वर्तमान में सापेक्ष गति 6.86 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस उपग्रह एक्सपोसैट के 2 मुख्य नितभार हैं। पोलिक्स, यह 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा बैंड में खगोलीय प्रेक्षणों के लिए एक एक्सरे ध्रुवणमापी है। इस नितभार को URSC और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस यंत्र में एक कॉलीमीटर, एक प्रकीर्णन और 4 एक्सरे अनुपातित काउंटर डिटेक्टर लगे हुए हैं। इस प्रकीर्णन को कम परमाणु द्रव्यमान वाले पदार्थ से बनाया गया है, जो आने वाली ध्रुवीकृत एक्सरे का विषमदैशिक थॉमस प्रकीर्णन करता है, ताकि एक समय में इस कॉलीमीटर के दृष्टि क्षेत्र को 3x3 डिग्री से सीमित किया गया है, ताकि एक समय में एक ही स्रोत उज्जवल हो सके। इस नितभार के 5 सालों के जीवन काल में 40 चमकीले खगोलीय स्रोतों का प्रेक्षण करने की अपेक्षा है। यह मध्यम एक्सरे ऊर्जा बैंड का पहला नितभार है जो ध्रुवण मापन के लिए समर्पित है। इसके अलावा एक और नितभार एक्सस्पेक्ट
एक एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग निर्धार है जो एक्सपोसेट में जा रहा है। यह सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रम में त्वरित समय तथा संवर्धित स्पेक्ट्रम विभेदन प्रदान करेगा। यह पॉलिक्स का डेटा को इस्तेमाल करते हुए निरंतर उत्सर्जन में वर्णक्रमीय स्थिति परिवर्तन, लाइन फ्लक्स और प्रोफाइल में परिवर्तन, 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रेंज में उत्सर्जन की लंबी अवधि में निगरानी कर सकता है। व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल। इसमें कोलिमीटर का उपयोग पृष्ठभूमि को कम करने के लिए एक्सेस स्पेक्ट के दृश्य क्षेत्र को कम किया गया है। एक्सेस स्पेक्ट विभिन्न स्रोतों जैसे एक्सरे, पल्सर, ब्लैक होल, लो मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रॉन स्टार और मैग्नेटार्स आदि खगोलीय स्रोतों का निरीक्षण कर सकेगा। कोस्टिंग फेज समाप्ति की ओर। Stage engine started. There's a confirmation that the fourth stage has commenced its operation. We are Plus 17 minutes. We are 17 minutes into the launch. Current altitude is 606 kilometers. Fourth stage performance normal. चतुर्थ चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित इंजन है, MMH और मॉन ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए यह 14.66 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसमें ऐसे 2 इंजन लगे हुए हैं। वर्तमान ऊंचाई 615 किलोमीटर, सापेक्ष गति 6.7 किलोमीटर प्रति सेकंड। चतुर्थ चरण वह अंतिम चरण है जो उपग्रह के अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपित करेगा। The fourth stage is based on liquid propellant. Propellant loading is 1.6 tons. The fuel is monomethyl hydrazine and oxidizer is mixed oxides of nitrogen. Presently, the tracking stations at Brunei and Bayak are tracking the launch vehicle. चतुर्थ चरण को PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि यह कक्षा में कुछ दिन उसी कक्षा में रहते हुए प्रयोग के लिए उपयोग में लाया जाएगा। एक्सपोसेट उपग्रह का प्रक्षेपण 650 किलोमीटर की चक्राकार कक्षा में किया जाना है। इसके पश्चात चतुर्थ चरण को बंद कर दिया जाएगा तथा कुछ समय बाद पुनः प्रज्वलित कर यान की कक्षा को कम किया जाएगा। यह 650 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की कक्षा पर लाया जाएगा तथा यहां ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग शुरू किया जाएगा। Fourth stage performance normal. सभी बेसब्री से इंतजार करते हुए कक्षीय स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह एक्सपोसेट को अंतःक्षेपित किया जाएगा। The fourth stage of PSLV currently thrusting. Plus 20 minutes. PSLV C58 के चतुर्थ चरण PS4 को त्रैअक्षीय स्थिर कक्षीय मंच के लिए तैयार किया गया है। इस मंच से कई महत्वपूर्ण और नवीन अंतरिक्ष प्रयोगों को कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि 50 एम्पियर आवर के लिथियम आयन बैटरी को आवेशित करते हैं। इसमें नेविगेशन, गाइडेंस, कंट्रोल और टेलीकमांड, कक्षीय आवृत्ति नियंत्रण तंत्र जैसे एवियोनिक सिस्टम भी लगे हुए हैं। यह पोयम की श्रृंखला में तृतीय प्रयोग है। We are very close to the scheduled exposat injection time.
जी हाँ, लगभग कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब किसी भी क्षण एक्सपोसेट को कक्षा में अंतरक्षेपित किया जाएगा। चतुर्थ चरण को निर्धारित रूप से बंद कर दिया गया है। Satellite injection conditions are achieved. Eagerly awaiting the next event. उचित अभिवृद्धि प्राप्त करते हुए यान तत्पश्चात एक्सपोसेट को अंतरक्षेपित किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य के प्राप्त होने के पश्चात प्रयोगात्मक क्रिया जारी रहेगी। Satellite separated. And there is a confirmation that the Exposat satellite has been separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर द्वारा। एक्सपोसेट को सफलतापूर्वक अंतरक्षेपित कर दिया गया है। But mission is continuing for PS4 orbit platform experiment, that is POEM 3, with 2 phases of 4-stage restart. After 2 phases of restart, PS4 stage orbit will be changed to 350 km circular. The first phase for PS4 restart happens in non-visibility period. The second phase of PS4 restart takes place in the visibility period of Trivandrum in orbit 2. During the non-availability period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. The non-visibility period is approximately 4,500 seconds. All the stations involved in operation shall continue in positions. Handing over to Mission Director. आपने ऑनबोर्ड कैमरे की मदद से देखा एक्सपोसेट और यह खूबसूरत पृथ्वी का नजारा। Has injected Exposat primary satellite into the desired orbit. We will be continuing the operations. 2 more PS4 restarts are planned, and the POEM 3 operations will be following. Approximately, the T0 will come around 2 hours after liftoff. Thank you. अब इसके पश्चात हम आपको अध्यक्षीय संबोधन के लिए ले चलते हैं और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। First day of the year, first launch mission for ISRO. This success matters much more in view of the rich data that Exposat will give to the scientific community in the field of astronomy. Congratulations, Team ISRO. Do stand by for the address by Secretary TOS and Chairman ISRO, Sri S. Somnath. We take leave from you. Goodbye. So happy New Year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C58 has placed the primary satellite Exposat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination. And we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite to have its solar panel deployed. That also will come in a few seconds from now. From this point, the orbit of the PSLV 4th stage will be reduced to a lower orbit, where the upper stage of the PSLV, which is now described as POEM, PSLV Orbital Experimental Module, will carry out experiments with 9 of the onboard payloads. And that will take some time, and we will come back to listen to all of that, what happened in the POEM experiments little later. Meantime, let me also announce the orbit that has been accomplished, which is available through various routes. It shows excellent orbit, and the deviations from the targeted orbit is hardly just 3 kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is
001 degree, which is one of the very excellent orbital condition. And yet another announcement is the solar panel of the satellite also has been deployed successfully. So with this, the new year has begun with the launch of PSLV. We have an exciting time ahead. Much before telling all of that, let me invite the mission director to have its words. Mr. Jayakumar is the mission director. Okay. Thank you, sir. I'm extremely happy to stand here to celebrate the grand success of the 60th launch of PSLV. As you all know, Expo Site is a space observatory, but what makes this mission more interesting is the host of new technologies that are getting demonstrated in the POEM-3 experiment. We have fuel cell, we have the silicon-based 10 ampere hour high energy battery, green monopropellant thrusters, amateur radio satellite service, and more important, a totally women-engineered satellite for the comparison of solar irradiance and UV index. This, I think, showcases women empowerment in the field of science and technology, and all the payloads, in fact, demonstrate the reforms that are currently sweeping the Indian space sector. But today's success has been made possible by the tremendous efforts put in by a whole group of people from Team ISRO, along with other stakeholders. This mission would not have been possible but for the wholehearted effort put in by various teams, the SDAs and SR agencies spread across different centers, starting from SDSC, URSC, STRAC, LPSC, IPRC, VSSC, IISU, LEOS, and also ISRO headquarters. I would also like to thank InSpace for acting as a nodal agency in identifying the payloads for POEM-3 and all the NGEs for delivering the various payloads adhering to our schedule. Let me also thank our industry partners for delivering quality products for the realization of the launch vehicle. Let me take this opportunity to thank Chairman ISRO for the mentoring and the guidance provided, and all center directors. Specifically, I would like to thank Chairman and members of MRR, FRR, LV, and ORC, Padmamar sir, Ashok sir and Shuja sir. They have taken extensive reviews, and all the DRTs for clearing the various systems, also the admin and the auxiliary services who have supported. I would also like to thank my own project team, especially Vehicle Director Damodaran, Associate Vehicle Director Joyce Joes, all the DPDs, the other team members, and the Project Management Office who has been effectively managing the campaign activities. Finally, I thank our family members for the support they provided to make our missions successful. Wishing all of you a happy and a successful new year. Good day. Jai Hind. Now the satellite director. Good morning all. As Chairman sir announced, I am happy to announce that satellite is placed in intended orbit flawlessly, and satellite health is normal. Solar panels are deployed and battery charging already started. And this is the unique mission, ExpoSat. It is a unique mission, and this is first mission worldwide to have a study of polarized X-ray sources, and the second mission for polarization. So first time we will be, this mission will give the polarization aspects of high energy cosmic sources and in medium energy band. And this will study magnetic field distribution in cosmic sources, and how magnetic field means originating, and alignment of these cosmic sources like black holes and this pulsar wind and sources, and all these cosmic sources. So it will be the extreme and experiment for our scientific community. Once this mission is commissioned, it will be very fruitful for scientific community worldwide. And I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Central Director URSC, all Central Directors for making this mission possible by their support and guidance. And special thanks to my former project directors, Shri Amreshwar Kenneth, Shri K. Suresh, and Shri Dr. Palani Murugan, for leading this mission in different stages of realization. And special thanks to my project team, project executive across the center, and payload team from Raman Research Institute and the Space Astronomy Group of URSC for their relentless effort for making this mission possible and realizing on time. And my special thanks to entire review committee for their guidance and support throughout the mission.
And special thanks to industry partners and URC team for their invaluable contributions for these missions. Now we are waiting for successful commissioning of these missions, and I am really privileged and honored to be part of this mission. I thanks everyone, and I wish happy and prosperous New Year to all of you. Thank you. I'll now request the key center directors who have contributed immensely for the successful mission of this PSLV Exposat mission. So first let me invite the director of the VSSC. Very good morning and a happy new year. 2023 was the 60th year of first sounding rocket that we launched from Tumba. So 60 years of rocketry, and PSLV is turning 60. And what a great takeoff on this New Year day with the successful launch of PSLV C58 Exposat mission. So apart from the main satellite, already project director has mentioned about the other payloads. There are some important payloads like fuel cell, which we will be demonstrating in the POEM phase, that is the subsequent phase when PS4 is used as a platform. And that POEM fuel cell will have potential application in our future missions like space station. So I wish Happy New Year, as well as I congratulate the entire ISRO launch vehicle centers, especially Vikram Sarabhai Space Center and all other launch vehicle centers, and wish all the very best to the satellite team and all the payloads in POEM in the subsequent operation. Thank you very much. Good morning to all of you. Today it is yet another historical day for ISRO. We in ISRO has given a New Year gift to all the Indians across the globe, as today we have successfully launched the Exposat satellite and 9 experimental payloads in the required orbit. And this is the 60th launch of the workhorse, the PSLV. As it was told when we are celebrating 60 years of first rocket launch, which happened on 21st November 1963. This is a major achievement for ISRO and the entire India. The performance of the vehicle, PSLV vehicle, was as expected and as predicted. Exactly after 21 minutes, it gave 25,300 km/h velocity and injected the satellite in the required orbit. And out of 60 vehicles, 58 vehicles, that is 96.7% is the success rate of PSLV. This is a great achievement. In this vehicle, further we are going to operate the PSLV 4th stage 2 times to accomplish and complete the mission. We have also first time placed very, very important payloads, as it was told. The fuel cell based 100-watt power generation system is placed along with 8 more important experimental things. All the vehicle systems have performed as expected and as predicted. As Chairman ISRO announced, the orbit dispersion was very, very minimal. And the propulsion community also can be proud. All the propulsion systems, including the liquid propulsion systems, have performed extremely well. As the Director of LPSC and Project Management Council, Chairman of Space Transportation System, let me take this opportunity to compliment and congratulate all the ISRO team members, our family members, the partners from industry and academia, all our elders who have made strong foundation for us to perform extremely well on this occasion. And let me also express our New Year greetings. Let all of us in ISRO continue the success saga to keep the organization high and contribute for the national growth and development. Thank you. Jai Hind. Good morning. From yesterday evening around 4:30 onwards, the world is celebrating the New Year with a lot of fireworks. And India has celebrated today the New Year with the largest rocket firework ever. And except India, nowhere else it is possible that on New Year's Day you have a rocket launch and an important satellite getting launched. So, and also as my friend Brindavan Mato mentioned, that this is only the second satellite to study the X-ray polarization and the black hole related this one in the whole of the world.
And this also is an indicator that we are on the right trajectory to reach to be the first in many things in future. From the point of catching up with the world, now we are in the trajectory to start to lead the world. That is what this is symbolic today that has happened. As already mentioned, this is a unique satellite, first of its kind, where we have polarization as well as spectroscopy and timing measurements of the galactic X-ray sources studying. So this is going to bring out new science, and not only for India, this area of work is new throughout the world. There are not many people in the world who are working in this area and studying this aspect of the universe, and we are leap forwarding towards the leadership in this role in this area. And congratulations to the payload team, particularly the Raman Research Institute and the Space Astronomy Group of URSC for coming out with this excellent payload, and for our teams across the ISRO centers who made this satellite realization possible. And currently the operations team at both URSC and ISTRAC, supported by many other people around the world, tracking and tending to this satellite. And I am sure in the next 5 years, this satellite is going to bring out outstanding scientific results. Wish you all of you once again very, very happy New Year. And we will continue this journey of celebrating in a most purposeful way like this in future also. Thank you. Very good morning, Respected Chairman and my dear colleagues. Once again, PSLV has delivered as promised and herald a very good new year to start in a successful note. And I also compliment the entire team of PSLV as well as the Exposat team to have such a unique mission on such an auspicious day on first day of the new year. Once again, it also shows what we can do in giving to the humanity as a whole and to explore the universe of data related to black hole and all those things, which is a new, unique research, and be able to integrate the payload from a research institution into this spacecraft and have a successful mission. And I wish them all the best. I also compliment the entire team across ISRO centers for putting such an effort during last 45 days, considering some of the weather conditions, and continuing with the launch campaigns, and also making all the solid motors and all the liquid engines in all the other centers to have successfully integrated, tested and complemented at SJC Shah, and go ahead with this launch campaign and be able to do it as expected, as thought on the 1st January itself. I wish all the people, colleagues in ISRO and across nation and all their family members a very happy new year and have a successful one. And let us, as it told, 2023 is almost a watershed year with almost 8-9 launches, and we have to continue to do that and come with a very good impact of both in research as well as in the coming missions. I wish you all the best, and once again wishing a happy new year. Thank you. Good morning to Chairman ISRO and all my colleagues here. It's really heartening to see that PSLV C58 majestically lifting off and going in the right path. And all the stations across our network has tracked fantastically and provided very good data. And we are still awaiting for the following orbit to really see the PSLV fourth stage getting into 350 kilometer and track further. It is going to be a really challenging event. And Exposat already being in orbit and is being controlled by ISTRAC is going very nicely. Panels have got deployed and further operations are in progress. And
Regarding ExpoSat, already told, it is another brother of AstroSat, and it is going to be a real compliment to the scientific community to explore this universe and find many things which has not been revealed till date. So I compliment everyone to the PSLV project, to the satellite team, and also at Science Data Center we are ready to receive the ExpoSat data and do the processing and provide to the community across the world. So we all wish the 2024 is going to be much challenging and further taking ISRO to greater heights. Thank you. Jai Hind. All the best. It's a great occasion, and Happy New Year to all of you out there. Our New Year gift to the nation, an excellent launch and an excellent orbit. Our heritage navigation system Resins has given almost an error of around 3 kilometers and in inclination 0.001 degree, which is truly world class. Kudos to the IASU team to have achieved such an orbit. The ExpoSat, as was highlighted, it's a small in size but great in its capabilities to look at the start of the universe. And the POEM 3, which is a very inexpensive microgravity platform, I think it is one of the unique platforms in the world. I think no other space agency provides such a platform. And this is a platform that ISRO is giving to the NGEs and academic institutions in the country to test their ideas and technologies. And we are very happy to see that the academia as well as the industries are using this platform to test their technologies, which will be going into their future missions. So congratulations to all of you, the academy, industry, and the new project team headed by new project director Sri Jayakumar, and the entire ISRO team to have achieved such an excellent launch. Thank you all. Happy New Year. Let us have a great 2024. Thanks to all the directors of the centers who have contributed for this mission in various ways, building the rocket, building the satellite, and also providing the ground infrastructure for us to operate and make this mission possible. So congratulations to all of you for your excellent contributions, and all the team members of ISRO and also the partnering academia and institutions for making this mission possible. Now, all of you know that the mission was at a 650 kilometer, 6-degree inclination, and we could have done the POEM experiment in the same orbit. But as a responsible space agency, we decided to bring the fourth stage to a lower orbit so that its life of the stage in the orbit is much lesser, so that we don't create debris in that process. So that's why it has been brought down to 350 kilometers. And in that orbit, we will be carrying out the experiment with the payloads, as already been mentioned. We have an interesting fuel cell experiment, which is going to be one of the precursors to our future powering of space station and other areas when we have to have power generation on board. And the VSAT is the Women Engineered Satellite, which is going to be an excellent contribution from all the girl students who have built this spacecraft. And we also have the experiments sponsored by various non-governmental entities, space startups in India, powered through the in-space coordination process. So congratulations to InSpace for enabling all these payloads on board the PSLV. And we are going to have not only that that this POEM is going to be unique in that aspect that all these payloads are there, but we are also having a unique way of dumping the remaining fuel and propellant and the gas in this stage with a different approach, which is again not going to be done for the very first time. And the entire platform of POEM is going to be stabilized using cold gas thrusters, which has worked in the last time very well.
So we are looking for the orbital change, which will happen by the 2 firing of the engines and also bringing to 350 kilometer circular orbit. And after that, the POEM experiment will start. And our expectation is the whole process of this testing will be over in very short time, and we'll be able to declare this POEM payload successfully, maybe a course of 1 month or so. So possibly all of you know that the POEM payload has its own power generation capability with solar cells, batteries, and its own computers and commanding systems. So it's almost a full-fledged spacecraft supporting all of you to conduct experiments at very low cost. So it's once again an invitation to all the startups, budding entrepreneurs, students across the country to come and host your payloads on board PSLV 4 stage for experimenting and trying out your new ideas. So with this, let me close today's mission activities from the control center of Satish Dhawan Space Center. And we'll be back with announcements through our social media platforms for what happened in the POEM and what type of results have come out. Wait for that. And this year just began, and we are going to have many launches. And 2024 is going to be the year of Gaganyaan. As you already know, the TVD1 mission has just been over last year, and this year we are expecting 2 more such test flights of the test vehicle, followed by the unmanned missions of the Gaganyaan program, and many more tests and experiments, which will be in very large numbers, which will not be coordinated from this control center. Similarly, we are going to have missions of PSLV, GSLV, as well as SSLV in the coming year, this year as well. So very hectic schedule waiting for all of you. And once again, let me wish a very, very happy new year 2024 for the entire family of ISRO, our partnering institutions, industries, and all our well-wishers. Thank you so much. Goodbye. जाएगा और उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित करेगा. We are very close to the launch, and let me quickly run you through the flight events. About the nominal flight timelines for the PSLV C58 ExpoSat mission. At T0, which is scheduled at 9 hours 10 minutes, the first stage PS1 ignites and followed by the ignition of the 2 strap-on motors 400 milliseconds later. The strap-ons continue to burn for 70 seconds, after which they are separated from the ongoing launch vehicle. The PS1 stage, that is the core S139, separates 109 seconds into the flight. By this time, the launch vehicle would have gained an altitude of 57 kilometers and acquired a relative velocity of 1.6 kilometers per second. All subs on. The stage 2 ignites after PS1, continues to burn for 152 seconds. Operational time for PS3 is 124 seconds. PS4 will operate for 247 seconds. Then the injection parameters will be achieved. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. VSPP opened. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. प्रमोशन से 15 सेकंड की दूरी पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य. Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाग से गुजरता हुआ प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा.
तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharp tracking station currently tracking the flight. Ground lid strap-on separated. दोनों स्ट्रेपॉन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Presently, the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। There is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है। इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है। Second stage performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है। By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal. Plus 4 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ Sharp tracking station continues to track. Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की